गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। तो स्टार्ट करवा आज आमर क्लास जोड़ा कि तुम मोस्ट अवेस्टेड जोड़ा रही कि केवे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम समस्त मन में किसी ना कि पैनिकनेस थी कि एग्जाम बहुत नियर हो गलानी आम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा मोर एंड मोर क्वेश्चन जोड़ा कि तुम एग्जाम वैल्यूबल हम एंड तुम मानक आशा कर सब क्वेश्चन निश्चित भाव में हेल्पफुल हम। प्रज्ञा गुड मॉर्निंग। तो समस्ते टिके जल्दी जल्दी पिला माने जॉइन हो जाओ 2 मिनट भितर और टिके समस्ते जॉइन हो जाओ सांग मानू शेयर कर ताकि समस्ते जल्दी जल्दी जॉइन हो जाए एंड जिते जल्दी जॉइन हम आम से जल्दी आम क्वेश्चन आंसर सेशन आरंभ करदे। अक्षय मु सार नुह मैडम टिके शेयर कर दियो पिला माने लिंक टाको समस्ते जमती जॉइन हो पारे। तो जमती थंबनेल अच्छी तुम देखुच कि एटा केवल पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन नुह कि तुम LTR मेंस यही सब तुमको हेल्पफुल हम। बीएड एंट्रांस OSSTET तुम OTT आगो को आसुची TGT एग्जाम आसुची RST जहाँ भी आसुची तुम मानक सब क्षेत्र में पेडागोजी हेल्पफुल हम। तो समस्ते टिके सांग मानक शेयर कर दियो जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ टे पिला जॉइन हेले भल लगे आमको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने किसी न था ना मुझे जस्ट कहली इट्स ओके। कहीं आउ कहीं तुम सांग साथी कहीं नहीं मात्र 3टा पिला प्रज्ञा अक्षय कथा कौन आउ बाकी ठीक अच्छे स्टार्ट करवा जी आसबे तापर जॉइन करेंगे मोर भी एमती हो जाए अक्षय ओके। तो पिला माने आज फास्ट क्वेश्चन देख कि TLMs आर टूल्स दैट कैन मेक ए लर्नर लर्न ए कॉन्सेप्ट विथ जो TLM गुड़ाक आम डे टू डे क्लास रे यूज करुचे से TLM गुड़ाक लर्नर को केमिति हेल्प करि थाए। ऑप्शन 1 विथ एज विथ बोर्डम with difficulty or with confusion। पद्मजा is प्रज्ञा ओके यस आई थिंक एटा बुझी होउथुबो किछि बुझाइबा को पड़िबोनी कि TLMs केमिति हम पई एज रहउची कि तमरो क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करिया पई बा तम डिफिकल्टी को दूर करिया पई TLM द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल फॉर टीचर्स। ओके नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ऑप्शन 1 लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन बी टीचर्स एंगेज द स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी टीचर्स डिसाइड ऑन द कंटेंट। ऑप्शन डी लर्नर्स आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। कोटा हम पिला माने ओके यस लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। ऑब्वियसली लर्नर सेंटर लर्निंग बाने ही चाइल्ड माने निजे निजे निजर प्रीवियस नॉलेज को यूज करके निजर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड इट इज लर्नर आर एक्टिव पार्टिसिपेंट एक्टिवली से माने पार्टिसिपेंट होइकि तांकर निज नॉलेज को निजे निजर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज थ्रू रे लर्न करेंगे। यस पद्मजा ना तुम ना कौन यस मत लगे मुझे भल पढ़देली। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा Which of the following is an objective type of test। एई भितरु को गुटिक होउची ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रा लक्षण राइटिंग एन एसे ओरल प्रेजेंटेशन ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कोउडा पिला माने जोश देखाओ टिके पिला एते कम हेले जोश आसीबो कि समस्त टिके जल्दी जल्दी जॉइन हे कि जोश देखांदे सिना। यस यस ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन एंड आउ बाकी जेतिकी रहिला राइटिंग एन एसे हो किंबा ओरल प्रेजेंटेशन हो किंबा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो सेटा एसे टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप नुह सेटा होची सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर रे आसीबो। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होनी नोइंग स्टूडेंट्स strength and weaknesses can help a teacher to better plan what to teach and how to teach it
Which of the following assessment can be used for search planning? Summative assessment, diagnostic evaluation, placement evaluation or post assessment. कोटा हबा पिला माने जल्दी जल्दी टिके समस्त रिप्लाई दियो, टिके एनर्जेटिक हुआ, एते डल हेले चलिबा. Yes, correct answer is diagnostic evaluation. बुझियाला पिला माने समस्त क्वेश्चन डा ना कहार किछ डाउट अछि? आई थिंक बुझी होथबो. जोटी डाउट साइड क्लियरली पचारिबा हमें क्वेश्चन सहित ऑप्शन नो एनालिसिस करिबा. ओके, नेक्स्ट बा कि diagnostic evaluation is specially conducted to identify and remove what? The learning difficulties of learner, the difficulties in placement, the difficulties of management and the difficulties in administering the test. कोडा पिला माने सागर एटा केवल तम पई नुह समस्तंग पई थिला. Yes, option A is the correct answer कि the learning difficulties of learner हमें को थ्रो रे जानी परिबा ना थ्रो diagnostic test और evaluation. अच्छा ठीक अच्छे अक्षय. नेक्स्ट देखा summative assessment is what? summative assessment कहले कौन बुझा जाए? assessment of learning, assessment as learning, assessment of learners, assessment for learning. कोडा है पिला माने समेटिव असेसमेंट कहले हमें कौन बुझी थाओ? ये शिप्सिता यस समेटिव असेसमेंट कहले कौन ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग. देन देखा द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दैट इज जेपीडी इज ए कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय हुम? पियाजेट, वाइगोट्स्की, पियाजेट एंड वाइगोट्स्की एंड ब्रूनर. कहा द्वारा पिला माने ताहले पियाजेट कौन कही? ओके पिला माने जदि एटा वाइगोट्स्की कही यस वाइगोट्स्की आंसर करेक्ट समस्तंकर. ताहले पियाजेट को विषय रे कही कॉग्निटिव और आउ गोटे भी क्वेश्चन आसी पारे परीक्षा रे एमती आछी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड बाकी ब्रूनर रहिले जे कि आइकॉनिक आ इनएक्टिव आ से सब जिनस विषय रे कहिथिले. ओके इन व्हिच अप्रोच डू द लर्नर्स चूज व्हाट दे विल लर्न, हाउ दे विल लर्न एंड हाउ दे विल असेस देयर ओन लर्निंग? को अप्रोच रे एटा हेई परिबो? ऑप्शन 1 लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन 2 लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच एंड ऑप्शन 3 टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन 4 टीचिंग सेंट्रिक अप्रोच. कोडा हबा पिला माने प्रज्ञा यस यस ऑप्शन ए जो माने कहछ करेक्ट कि लर्नर सेंटर रे अप्रोच रे जेहेतु गोटे चाइल्ड निजर लर्निंग सिस्टम को निजे इनिशिएट करूची केते बेले पढिबो कोन पढिबो को उपाय रे पढिबो तार ही फुल इंडिपेंडेंस रहिला. तो एटा होची लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. नेक्स्ट बा देखो एटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट? एति के चारटा स्टेटमेंट भितरु कोउटा होची ट्रू? ऑप्शन 1 cognitivist perspective focused on hidden behavior whereas behaviorist concentrate on role of internal cognitive process in learning. Option B behaviorist perspective focused on hidden behavior whereas cognitivist concentrate on the role of external cognitive process in learning. Or option C cognitivist perspective focused on observable behavior whereas behaviorists concentrate on role of internal cognitive process in learning. Or last one होची behaviorist perspective focused on observable behavior whereas cognitivist concentrate on role of internal cognitive processes in learning.
टिके पढ़ टाइम टेकिंग हबो एंड आंसर दियो जो मैंने कॉग्निटिविस्ट थिंकर थिले से माने कोन हिडन बिहेवियर को फोकस करूथिले एंड बिहेवियरिस्टिक कौन करथिले कॉग्निटिव प्रोसेस एडा हबो अक्षय आंसर देलेनी सागर भी डी नेक्स्ट सौरभ सी इफ्शिता ओके नेक्स्ट यस जो मैंने ये ऑप्शन डी आंसर दौच ऑप्शन डी इज करेक्ट कहीं बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बिहेवियरलिज्म ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को देखिकी ही तांकर रेस्पॉन्सेसटा आसी थाए जोटा तांकर एनवायरनमेंट सहित ही कनेक्टेड थाए एनवायरनमेंट थ्रो रे इंटरेक्शन हबा द्वारा तांकर ऑपरेंट कंडीशनिंग हो कि जहाँ भी हो तांकर जो आसी थाए आउटकमटा सेटा थ्रो ऑब्जर्वेबल थिंग्स एंड कॉग्निटिविस्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन रोल ऑफ इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस इन लर्निंग माने कौन तुम कॉग्निटिव प्रोसेस रे कौन थाए पिलाटे निजर पियाजेट कहते किसी ना किसी थिंकिंग पावर जन्मरू ही तार थाए तार एक्सपीरियंस द्वारा जो थिंकिंग पावर बा प्रीवियस नॉलेज थाए ता इंटरनल थिंकिंग को से निजे यूज करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे जो लगे आम कहीजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से लगे ऑप्शन डी हम पिला माने एंड जो मैंने ऑप्शन सी कौच कौन देछि ऑप्शन सी देखा Cognitivist perspective focused on observable behavior, whereas behavioristic concentrate on role of internal cognitive process in learning. पिला माने ए जिनसटा को से रिवर्स करि देछि तो सेथे लगे एठी हबनी कि कॉग्निटिव ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को फोकस कर जाय किंतु बिहेवियरिज्म रे कोन कहछि ना इंटरनल थिंकिंग पावर बिहेवियरिज्म रे तमे समस्त जानिचो कि इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस कथा कोठी मध्ये आसी नाही तेणु जो माने ऑप्शन सी कहउछ एटा ऑप्शन सी हबो नाही एप्रोप्रिएट आंसर होछि ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट जिबा कि which of the following along with teaching makes teaching learning transaction effective competing or punishing or testing option D procrastinating कोडा हबा पिला माने प्रज्ञा ए ओके प्रज्ञा सांग संगे आंसर चेंज नहीं यस टेस्टिंग टेस्टिंग होची करेक्ट आंसर थ्रो टेस्टिंग कौन हम ना टीचिंग मेक्स टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन इफेक्टिव कहीं थ्रो टेस्टिंग टीचर आसेस करें पिला मानू टेस्टिंग थ्रो रे पिला माने निजर वीकनेस स्ट्रेंथ जानी पारे जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा इफेक्टिव हम है डी रा मीनिंग टा टिके कहिबे प्रोक्रास्टिनेटिंग ओके कंपीटिंग तो पिला माने कंपीट करबा नाही पनिशिंग प्रोक्रास्टिनेटिंग माने जोटा ठकीबा जिनसटा होची तमे बैक बैक रखी देकी पढिबार बुझुच बुझेला से जिनसटा हेले तमे धर कहिदेला कि आज गोटे वीडियो होची एंड तमे बैक रे रखी देकी पढिया पई कहूछ कि तमे काली पढिबो जो जिनसटा सेमिति हेले तम लर्निंग प्रोसेसटा केबे भी इफेक्टिव हेई परिबनी तमर बैक साइड गोटे गोटे जिनस बैक बैक हेई तमर रहिबो तम टीचिंग प्रोसेसटा इफेक्टिव केबे भी हेई परिबो नाही बुझिहेला डी ऑप्शन प्रोक्रास्टिनेटिंग मींस पिला माने टिके समस्ते गोटे काम कर निज ग्रुप रे जदि भी लिंक शेयर हेनी टिके शेयर कर कि तुम सांग मन को शेयर कर बहुत कम छुआ अच्छ मत लगुच मो एनर्जी ही डाउन हो जाऊँगी समस्ते थिले ही आम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कले गोटे कंपटीशन बढ़िबो तो ट्राई कर शेयर करने समस्ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख द पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट स्कूल बोर्ड्स आर इंटरनल असेसमेंट बी इनफॉर्मल असेसमेंट सी एक्सटर्नल असेसमेंट डी इक्वालिटी असेसमेंट कोडा हबा पिला माने वेरी नाइस सब जिनस रे पूरा दमदार दम रखी के अच्छा यस द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन स्पीकिंग टू देमसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग ए वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इन टर्म एज प्राइवेट स्पीच फ्रेमिंग स्पीच एक्सटर्नल स्पीच और कम्युनिटी स्पीच
कोटा हम पिला माने ओके इप्सिता ए जिनसटा करि सर देन डिस्कशन करिवा प्रीवियसटा अच्छा ठीक अच्छी यस जो मैंने प्राइवेट स्पीच कहूच करेक्ट आंसर कहीं कहि परिबो भाइगर्स के जो प्राइवेट स्पीच कथा कहिथिले सेटा केते रु केते एज ईयर भितर रही थाए प्राइवेट स्पीच टा कोरु को ईयर पर्यंत तो मैंने प्राइवेट स्पीच टा कहू था एंड मु से जने पचारिले कि देख जे पचारथिला कि इनफॉर्मल असेसमेंट के जने पचारिथिले तो इनफॉर्मल असेसमेंट माने जोडा इनफॉर्मली तमे करि थाओ जेमते कि क्लासरूम रे गोटे सिचुएशन होउची तमे किछि गोटे क्वेश्चन पचारि दउछ फॉर्मल मीन्स कोन जोथिरे तमे ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड रूल फिक्स करके गोटे एग्जामिनेशन करूछ जेमते तमर यूनिट टेस्ट हो पिला माने प्रायर परमिशन माने जानि छंती कि प्रायर नॉलेज अछि कि तांगर यूनिट टेस्ट होउची एतिकी मार्क रो होउची से माने करियर अछंती सेटा असेसमेंट हुए कोन कि फॉर्मल वे रे तम गोटे सिस्टमैटिक वे रे किंतु तमे गोटे जाउछ छोटा को एमिति रे क्लासरूम रे किछि गोटे क्वेश्चन पचार दउछ बाहर देखिलो किछि गोटे क्वेश्चन पचार देलो कि प्लेग्राउंड रे देखिलो ताको ऑब्जर्व करी किछि गोटे असेस कला सेही जिनसटा होची तमर इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर माने कोन तमे इनफॉर्मल प्रोसीजर रे किंतु असेस करूछ पिला को पिलार एक्टिविटीज को एंड लास्ट को ताको किछि गोटे ग्रेड दउछ कि तार एक्टिविटीज ऊपर बुझियला यस प्राइवेट स्पीच टा जो माने कहूछ 2 to 7 ईयर मोस्ट ऑफ द बही रे अछि एंड तुम ऑप्शन देखिबो जदि 2 to 7 ईयर नथिबो ताले 3 to 7 इयर्स बोली एप्रोप्रिएट माना जिवो किंतु 2 to 7 ईयर मोस्ट ऑफ द बुक रे अछि कि प्राइवेट स्पीच टा 2 to 7 इयर्स ईयर मध्ये रे पिला मध्ये डेवलपमेंट अति उच्च मान रे हेई थाए ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू Option 1 TLMs capture the attention of learners in a classroom. Option 2 TLMs bring about a temporary retention of information. Option A only 1 is true, B only 2 is true, C both 1 and 2 true, D neither 1 nor 2 is true. कोडा बा पिला माने Yes very good. Option A that is only 1 is true माने कौन ना TLMs capture the attention of learners in a classroom TLM यूज द्वारा आमे लर्नर मान का attention gain करि परिबा बट सेकेंड जोटा रहिला TLMs bring about a temporary retention of information एटा नुह जदि तमे पिला मान का attention आनी पारुछ एंड से माने एक्टिवली लर्न करि पारुछंती ताले एटा कोन हबो लॉन्गर रिटेंशन पई तुमको हेल्प करिवो नाइ कि टेम्पररी रिटेंशन ओके यस जे कहि छंती कि कोन मुकेश साहू यस द परमानेंटली रिटेंशन करे देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए टोल्डर अटेम्प्टिंग टू वर्क is helped by her parent by holding hands providing support is an example for knowledge adaptation knowledge construction zone of proximal development or scaffolding कोडा हबा पिला माने yes सी डी एठी गला एठी सी डी भितर महायुद्ध हो गला तो देख पिला माने जो माने स्कैफोल्डिंग कहउछ इट स्कैफोल्डिंग होबा करेक्ट आंसर स्कैफोल्डिंग माने कोन असिस्टेंट फॉर सम टेम्पररी पीरियड तो एठी कोन अछि कि गोटे टोल्डर अटेंडिंग टू वर्क इज हेल्ड बाय हर पेरेंट टोल्डर को कोन सब बेले हेल्प करा जाय कि तो टोल्डर जेते बेले किछि समय पई तमे कोन जानछो स्कैफोल्डिंग ता कोन जेपीडी रो गोटे पार्ट हबो जेपीडी गोटे ब्रॉडर टर्म हेले स्कैफोल्डिंग गोटे स्मॉलर टर्म जोटा कि टेम्पररी असिस्टेंट देइ थाए पिला माननकु कोनोसी जिंस रे जो माने तमठु अधिक जानि छंदी से माने तमको किछि असिस्टेंट करबे गोटे टेम्पररी पीरियड पई तो एठी गोटे टोल्डर को चलिया पई जेते बेले तार पेरेंट्स बा ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प करू छंदी तो सेटा आसबो स्कैफोल्डिंग अंडर रे बुझियला ओके ठीक अछि मुकेश आगो को डिस्कशन करले मु क्लियर कर देबी आउरी क्वेश्चन अछि जेपीडी एंड स्कैफोल्डिंग हमें डायग्राम करी के बुझी जिबा नेक्स्ट देखो व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड इंडिविजुअलिटी चाइल्ड रो को अप्रोच ता लर्निंग रो जो हमें पढिचे सेटा शो करी थाए ऑप्शन ए ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिव अप्रोच ऑप्शन बी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑप्शन सी बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव अप्रोच ऑप्शन डी कॉग्निटिव अप्रोच कोडा पिला माने
रुशांत करवा मु कहली लास्ट को करवा स्कैफोल्डिंग आ जेपीटी भीतर डिफरेंसेस कहीं ना आगो को बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी तो से करदेमी यस कई पिला कॉग्निटिव कहउछंती एंड कई पिला ह्यूमनिस्टिक कहउछंती ओके तो पिला माने जो माने कहउछ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज द बेस्ट आंसर तो देखिबा काहे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देउची देखो एठी देइचे कि व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंडिविजुअलिटी मोटिवेशन इंडिविजुअल वर्क प्रोसेस प्रॉपर पूरा होलिस्टिकली केमिति गोटे इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गेन करिवो का थ्योरी अछि जोटा कि कार्ल रोजर्स कहिसंदी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कि ह्यूमन ऊपर प्रॉपर ऊपर ह्यूमन रो फोकस दिया है ह्यूमन कौन करिवो तार एक्टिविटीज तार सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन केमिति पाई परिवो तार इंडिविजुअलिटी ऊपर कौन फोकस करे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कॉग्निटिव अप्रोच तो तुमरो थिंकिंग प्रोसेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रहिला पिला माने एठी इंडिविजुअलिटी हबो नाही ओके नेक्स्ट जीवा कौन के कहले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच चाइल्ड रो इंडिविजुअल ऊपर इंपोर्टेंट दिए यस मुकेश देन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को स्कॉलास्टिक एरिया फॉर असेसमेंट कोटा भितरु को स्कॉलास्टिक एरिया ऑफ असेसमेंट को बुझाई थाए आर्ट एजुकेशन लैब प्रैक्टिकल्स मदर टंग और ज्योमेट्री कोटा पिला माने प्रज्ञा पूरा फास्ट से पूरा जोश रे होइछंती प्रज्ञा एंतिया क्वेश्चन पढ़ले मत लागुच आम पिला माने पूरा उड़े दे के आसीबे यस ऑप्शन ए होचे आर्ट एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बा पिला माने कि द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय एलिमेंटरी टीचर्स टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट इज टू व्हाट ऑप्शन ए ऑब्जर्व हाउ द चिल्ड्रन गेट अलोंग विथ अदर्स ऑप्शन बी rely heavily on actual samples of student work option C use commercially prepared tests like Olympiads option D observe and make subjective notes कोटा हबा पिला माने यस देवस्मिता प्रणाम तम समस्त आंसर होची ए मिशन हिमालयन से कहले बी देवद नायक देवस्मिता दास पिला माने एठी ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर रिले हेवीली ऑन एक्चुअल सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट वर्क तो बुझ काहे कि ऑप्शन बी होची कि से पचारि स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय एलिमेंटरी टीचर्स टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट तो जने एलिमेंटरी टीचर को स्ट्रैटेजी अवलंबन कले से छुआ मानकर आसेस करें प्रॉपर्ली कौन ये देखिए हेवीली ऑन एक्चुअल सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट वर्क माने कौन थ्रो प्रोजेक्ट हो थ्रो ग्रुप वर्क हो जिते गोटे एक्चुअल सैंपल बा पोर्टफोलियो थ्रो हो से जिनस गुड़ाक जब टीचर यूज करुँच स्टूडेंट मानकर एक्चुअल वर्क कौन गोटे होल ईयर भितर गोटे कोर्स भितर कौन हो थ्रो पोर्टफोलियो बा थ्रो रुब्रिक्स से क्राइटेरिया फिक्स करदेले से क्राइटेरिया माध्यम रियल प्रोजेक्ट रे कौन कौन तांकर इन्वॉल्वमेंट रहिला सेही थिरु ही एक्चुअल नॉलेज जोटा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेबल नॉलेज टा टीचर गेन करि परिबे सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होची रिले हेवीली ऑन एक्चुअल सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट वर्क जदि ऑप्शन ए तम माने कहउतलो ऑब्जर्व हाउ द चिल्ड्रन गेट अलोंग विथ अदर्स एटा गोटे कंपैरिजन हे जिवो कि जनकर धर मोर ग्रोथ होची तम सहित को परिमाण ग्रोथ होची काई डेवलपमेंट होची सेटा गोटे परफेक्ट जिनस नुआ कि स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस को असेस करबा पई तो एठी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हबो बुझियला ना कार डाउट रहिला कि ऑप्शन बी काहे कि हबो एनी डाउट ओके नेक्स्ट जीवा कि in order to reduce subjectivity and increase transparency in scoring oral presentation and speeches it's best to use criteria multiple evaluation rubrics or compiled scores कोडा हबो पिला माने मुकेश कहले सी यस
जो मैंने रुब्रिक्स आंसर दौचे ये करेक्ट आंसर हम कहीं रुब्रिक्स माध्यम कौन होता है गोटे क्राइटेरिया विभिन्न प्रकार क्राइटेरिया फिक्स कराई एंड से क्राइटेरिया अनुसार ही कंटेंटर क्राइटेरिया हिसाब से गोटे मार्किंग प्रोसीजर करा एंड गोटे स्टेटमेंट प्रोवाइड करा जो थे कि तुम जापर कि ट्रांसपेरेन्सी इन स्कोरिंग ओराल प्रेजेंटेशन एंड स्पीचेस माने धर तुम किसी गोटे ओराल प्रेजेंटेशन तुम दौच बा स्पीच दौच तो कौन हम से कि तुम किसी ना कि क्राइटेरिया थी जमी तुम वॉइस मॉड्यूलेशन कौन रोची तुम कहबार एक्सप्रेशन कौन रोची तुम वार्डिंग तुम केते परिमाणर वार्ड यूज कर स्टैंडर्डाइज वार्ड कौन कर सबूर क्राइटेरिया अच्छी एंड से क्राइटेरिया को इंक्लूड करके रुब्रिक्स मार्किंग करुँच स्टेटमेंट दौची तुम कौ हिसाब से कौन करुच तो ये बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम रुब्रिक यस यस मुकेश करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए क्वेश्चनियर seeking students reflection on their progress in their lesson including on how they feel is a standard assessment, diagnostic assessment, constructed assessment, self assessment कोटा है पिला माने दी तीन जन बी भी कहते यस ये राइट आंसर होची सेल्फ असेसमेंट देख पिला माने डायग्नोस्टिक कहीं हेनी देख ए क्वेश्चनियर सीकिंग स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर प्रोग्रेस ये देख स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर प्रोग्रेस इन देयर लेसन इंक्लूडिंग हाउ दे फील इज माने कौन गोटे रिफ्लेक्शन हम निजर टीचिंग प्रोसेस रे सेमानक प्रोग्रेस केते हेजी एंड सेमाने सेटा को नेकी केमिति फील करूछंती तो सेटा को द्वारा हे परबा सेल्फ असेसमेंट तमे ही तम निजर रिफ्लेक्शन करि परिबो गोटे टीचिंग प्रोसेस रे कि तमर प्रोग्रेस केते हेजी तम लेसन ने इंक्लूडिंग हाउ दे फील माने तमे कौन फील करूछ तम प्रोग्रेस को नेकी तमर गोटे एग्जामिनेशन होउची एग्जामिनेशन पर जो स्कोरटा बाहुची तमे तम प्रोग्रेस को नेकी कौन फील करूछ निजे को निजे असेस करछ बोली एठी सेल्फ असेसमेंट अब डायग्नोस्टिक हम नहीं ओके नेक्स्ट देखा ऑन देयर प्रोग्रेस सो है सेल्फ हम ओके देवस्मिता राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हो इन ऑर्डर टू कोरिलेट टेस्ट स्कोर्स विथ टीचर्स एस्टिमेट्स ए टीचर कुड कोरिलेट विथ अदर टेस्ट स्कोर्स एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ऑप्शन बी कंडक्ट टेस्ट अंडर स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड यस मार्क स्ट्रिंजेंटली सॉरी देखा गलानी भल से पिला माने आस्क पेरेंट्स टू वैलिडेट द स्कोर इन टेस्ट अलाउ फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड कोटा हबा ऑप्शन ए yes पिला माने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज कोरिलेट विथ अदर टेस्ट स्कोर्स and classroom observation okay next ba which of the following is not an objective of formative assessment ro कोडा ए भितर objective नुहे option A to know about child's misconception option B to assess the child's understanding of the construction of knowledge option C to introduce a new concept based on the previous concept option D to know if a teaching strategy appropriate or not कोटा बा पिला माने अरे बा मो पढ़ा न सरने मो पिलांकर आंसर पूरा दड़ा दड़ा आंसर आस जाउ yes option C is the right answer to introduce a new concept based on the previous concept पचारिछि कोटा नुह ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझियला then next question which of the following statement best describe formative evaluation in evaluation procedure एबे देख साइड पचेतला कोटा तार ऑब्जेक्टिव नुह एंड एटी कोटा हब ऑप्शन ए teacher awards grades to students after having transacted the coursework option B the teacher clarifies the doubts of the student in the class itself
Option C, the overall performance of a student is reported to parents every 6 months. Or option D, the teacher gives marks to the student in the final examination at the end of the year. कोटा बा पिला माने formative assessment. Yes. Yes, option B जो मैंने कहूँ option B is the correct answer. The teacher clarified the doubts of the student in the class itself throughout or during the session चलुची classroom interaction so that it is formative evaluation. Okay. Next देखा, given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. तो देखिए A रे कौन सी assertion formative assessment are used for providing feedback to the learner for improvement and reason होची formative assessment improve the teaching learning process. In light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. कोटा बा पिला माने Sagar Kumar. Yes. Yes, option A is the correct. Both A and R true and R is the correct explanation of A. Next jiba पिला माने एठी तम पई गोटे इन्फॉर्मेशन रहइबो जो माने एग्जाम एलटीआर फैक्टरी हमर विद्याकर चैनल जोडा प्रोवाइड कराउची आर्ट्स हो पीसीएम हो सीबीजेड हो जो माने जॉइन करिछ से माने ऑलरेडी फील करि सारिवणी कि को हिसाब रे तुमको कोर्स प्रोवाइड करा जाउची किंबा तुमको केते लेवल लो क्वेश्चन दिया होची आ तमरो केते कॉन्फिडेंस आदर बूस्ट होची एंड हेल्पफुल हेई पारुची एंड जो माने भी भाबुचो कि तमे विद्याकर सह कनेक्ट हेई कि हमर एलटीआर फैक्टरी जोडा रहिची क्वेश्चन तुमको डिस्ट्रीब्यूट करा होची यूनिट वाइज तुमको क्वेश्चन दिया होची एंड मैराथन क्वेश्चन भी अच्छी जो तुमको हेल्पफुल होबो कि तमे को लेवल लो प्रिपरेशन करिछ एग्जाम पई एंड तुमको केते करिवार अछि सेही अनुसार तुमको हेल्पफुल होबो जो माने चाहुचो एबे भी समय अछि तुमे हम चैनल सहित जॉइन हेकी एलटीआर फैक्टरी जॉइन करके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एंड सॉल्व करिया पई तुमको हेल्पफुल होबो नीड ए मैराथन एम इंग्लिश पेडागोजी ओके प्रीतिश रंजन सा नै के आसीबा इंग्लिश पेडागोजी रो वेट करंतु पिले माने एठी देखो आ सहित जो माने एलटीआर एग्जाम छड़ा अन्य भी कई पिला थिबो किबा प्रिपरेशन करिया को चाहूतबो आम चैनल द्वारा ए सब देखो मिशन आईएएस हो सीजीएल प्रीलिम्स एंड महाप्रहार जोडा रहउची आरआई एआरआई अमीन पई मेंस एग्जाम एंड देखो एठी टेस्ट सीरीज मध्ये रहिची मेंस पई एंड वारियर ओडिसा महापैक रहउची ओपीएससी एएसओ ओएसएससी सीजीएल ए सब एग्जाम पई रहउची एंड ओपीएससी एएसओ पई वेदा टेस्ट सीरीज मध्ये रहउची जो सब गुडा करे तमे जे चाहूथबो अलग अलग एग्जाम रे भी जॉइन करके प्रैक्टिस करिए पई हम चैनल सहित जॉइन मध्ये हेई पारिबो मैम इंग्लिश पेडागोजी कौन एलटीआर मेन्स रे आसे यस देवस्मिता आसे आर्ट्स पिलांगर एंड जदि साइंस रा सिलेबस मु देखिनी जदि तुम इंग्लिश अच्छी ओडिया इंग्लिश ताले ओडिया पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी निश्चय आसीबो एंड आउ गोटे इनफॉरमेशन समस्त जो मैंने भी आम चैनल सहित एबे जड़ित अछंती कि एसएसबी टीजीटी आरएसटी आगो को बाहर को जाउची आपनक भितर जो माने एलटीआर प्रीलिम्स क्लियर करि नाहंती चाहुछंती कि आगो को आरएसटी एंड टीजीटी पई प्रिपरेशन होबा पई किबा ओएसटीटी ओटीईडी पई तो आम चैनल एही सब पई कोर्स प्रोवाइड करूची तो किछि जानिया पई चाहुछंती हमर ऑफिशियल नंबर दैट इज 8093073341 और 42 रे कांटेक्ट करंतु एवं जहाँ भी आपनकर क्वेरी रही जॉइन करने को चाहूँगी कि केमिति कोर्सटा नेबे किबा केमिति सब पढ़िबे आपण कॉल करी बुझिले आपनको गाइडेंस मिल जिवो ओके नेक्स्ट जिबा हमर क्वेश्चन आंसर को आसे काई मु तो देखिनी भलो से क्वेश्चन देखो इंग्लिश जोठी ग्रामर अछि इंग्लिश पेडागोजी सेठी ही आसे ओके आर्ट्स रे ही इंग्लिश अछि एंड इंग्लिश पेडागोजी आसे the type of evaluation which gives feedback to students as well as teacher is placement, formative, summative, diagnostic. Yes, formative evaluation. Next,
कि व्हाट डज द टर्म फीडबैक मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट. ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ ग्रेड, ऑप्शन बी इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मिस्टेक्स, ऑप्शन सी हाइलाइटिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी शेयरिंग सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. कोटा पिला माने yes yes option D is the correct answer, that is sharing suggestion for improvement. बुझेला. Cherry took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her students. It may be denotes as assessment of learning, assessment for learning, learning for assessment, learning of assessment. कोटा हबो पिला माने ओके. ओम प्रकाश एटा माने कौन मुथी मारदवा. तो ऑप्शन बी एटी करेक्ट आंसर पिला माने असेसमेंट फॉर लर्निंग. कहीं एठी हबो कि कहीं ना चेरी टूक और क्लास फॉर ए फील्ड ट्रिप. बुझा गोटे फील्ड ट्रिप को जहाँ भी टीचर बाब टीचर ता पिला मानन को फील्ड ट्रिप को नहीं जे एंड आफ्टर कमिंग बैक आसीबा परे सी डिस्कस द ट्रिप विथ हर स्टूडेंट. से डिस्कस करूची क्लैरिफाई करूची सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन करूची. माने कोन एटा गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस चलीला गोटे क्लासरूम सिचुएशन ने तुमरो डिस्कशन हैला एवं तुमरो जहाँ भी सही फील्ड ट्रिप को नहीं के डाउट रहिला. सपोज गोटे म्यूजियम को जाइछ एंड तुम स्टडी रिलेटेड सेटा किछि कनेक्टेड अछि देन तुम जो डिस्कशन कल तुमरो क्लैरिफाई हैला तो सेटा होची असेसमेंट फॉर लर्निंग. ऑफ माने एंड सेशन ने जहाँ हबो तुमर एटी एंड रे किछि होउनी किबा तुमको किछि वैल्यू जजमेंट करा जाऊ नाही. देन लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग फॉर असेसमेंट एंड लर्निंग ऑफ असेसमेंट सेमिति तुमर किछि नाही. तमे आखे बुझी के एटा को डाली करिया कथा कहि देली नि डिलीट करिया कथा ए एंड बी आइदर ऑफ नहले फॉर. तो एटी फॉर हबा एप्रोप्रिएट आंसर. देख ये लर्निंग फॉर असेसमेंट रो माने किछि नाही एंड लर्निंग ऑफ असेसमेंट रो भी किछि माने नाही. तमर सेमदी टर्म असेसमेंट रे नाही. असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग अच्छी. लर्निंग फॉर असेसमेंट की लर्निंग ऑफ असेसमेंट नहीं. बार बार से जिनस रिपीट करूची एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग सेठी होता जदि एंड सेशन ने तुम किसी गोटे कर कि कोर्स वर्क सरी जाता. जेहेतु क्लासरूम डिस्कसन ने तुम प्रोब्लेमटा से सॉल्व करुँच फेरिबा पर तुम सहित डिस्कस करके से क्लैरिफाई करुँच गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस चली. तो सहीटा हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग. ओके ए सेम क्वेश्चन तो पीआईक्यू रे आसीथिला असेसमेंट ऑफ लर्निंग आंसर थिला ना ना एटा असेसमेंट फॉर लर्निंग हम. देख एमती भी हो जाए पारे कि तुमर केबे भी कौन सी क्वेश्चन किछि आसी जाई थई पारे. तो जोटा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तुम मन रखिबा एंड तार प्रूफ भी थिबा एंड तुम माने किछि भी अटेम्प्ट नहीं परथुवा कि तुमको चैलेंज करिवार अछि. तो क्वेश्चन कोन आंसथिला नुवा तुम एनालिसिस करके कोटा करेक्ट तुम सेटा को. एग्जामिनेशन ने तो बहुत क्वेश्चन पीआईक्यू रे भूल भी थाए. तो नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ समेटिव असेसमेंट. एग्जाम, प्रोजेक्ट्स, क्विजेस, असाइनमेंट, पीयर इवैल्यूएशन. Sagar, we will try to provide. ओम प्रकाश कौन तुम साइन मु किसी बुझी पारुनी मटे कह से जो हाथर एमती वाला साइन टा कौन. पूरा जोश रे से सब आंसर कहे कि एस ऑप्शन ये जो माने कहूछ पीआर इवैल्यूएशन एठी आंसर हबो. पिला माने एठी पचरे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ समेटिव असेसमेंट.
समेटिव असेसमेंट रे पिला एटी क्विज काहे कि हेई परबो मु तुमको कहूची कि देखो एग्जाम्स तमे एंड रे करि पारो किबा तमर जोटा 6 मंथ रे होची सेटा भी गोटे समेटिव असेसमेंट अब प्रोजेक्ट्स तमे धर गोटे प्रोजेक्ट माध्यम रे तमे एग्जामिनेशन करबा को चाहूछ जेमति कि हायर लेवल ले थाए कि गोटे प्रोजेक्ट मध्ये 100 मार्क्स थाए जोटा कि समेटिव इवैल्यूएशन लास्ट रे फाइनल ग्रेड दबा पई बा परसेंटेज दबा पई प्रोजेक्ट प्रोवाइड करा दै थाए प्रोजेक्ट मध्ये समेटिव इवैल्यूएशन अंडर रे आसबा एंड क्विजेस जो क्विजेस माध्यम रे कुहा जाईछि कि करिवो तमे गोटे एग्जामिनेशन सिस्टम क्विजेस टा भी सम टाइम आसबो एठी दैछे बेस्ट कोटा हबो एई तक ऑप्शन भितर कोटा हबो जदी एई तक ऑप्शन भितर नबा असेसमेंट एंड क्विजेस मध्ये समेटिव रे आसीबो बट पीयर इवैल्यूएशन जोटा सेटा तमरा असेसमेंट प्रोसीजर रे आसीबो काहेना पीयर माने तुमको फीडबैक दबा द्वारा तमे तमरा इंप्रूवमेंट करि पारिबो तुमको जदि गोटे ऑप्शन बासिबार दिबो मु मना करूनी कि से सब हेई पारिबोनी किंतु मु एठी देवस्मिता कहूचे कि एई तक भितरु तमर कोउटा बेस्ट एप्रोप्रिएट एंड जदि एई तक भितरु तुमको बेस्ट एप्रोप्रिएट पचारे ताले तुमे पीयर इवैल्यूएशन करिवो जदि ऑप्शन ने तुमको सी एंड डी को बाछिबा पई भी देई देछि किबा बी को बाछिबा पई देई देछि जदि ए बी सी ओनली किबा एमती किछि देछि ताले तुमे आराम से बाछि पारिवो किंतु जदि तुमको एमती पांचटा ऑप्शन दे के मोस्ट एप्रोप्रिएट बाहर करिया कहूचे एठी मोस्ट एप्रोप्रिएट तमर पीयर इवैल्यूएशन ही हबो Then what is the main goal of assessment? Main goal of assessment कौन ना to compare students performance with their peers, to assign grades to student, to evaluate teachers performance, to promote student learning and growth. ओके एटा बहुत इजी क्वेश्चन है गला तुम मानक पई यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग एंड ग्रोथ यस कौन तुम ना लुसना प्रियदर्शिनी यस या परठू तुम्हारा सब बेले मैराथन चलिबो एग्जाम जाए डोंट वरी आमे पीरियडिकली नियत क्लास नहीं के आसीबा एंड डिफरेंट क्वेश्चन नहीं के आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट 1 होची असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग and statement 2 होची no feedback is required to be given in formative assessment in light of the above statement छाड़ एटा पढ़िया दरकार नहीं कि एई तक भितरु कोटा हबो त माने एई ऑप्शन भितरु कहबा both statement 1 and 2 are correct both statement 1 and statement 2 are incorrect or statement 1 is correct but statement 2 is incorrect statement 1 is incorrect but statement 2 is correct कोटा हबो अच्छा तो अपन कौन डी कहलनी भाभी के आंसर दियो तो राइट आंसर हम सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग माने थ्रो असेसमेंट तमरो लर्निंग पई पाथ बाहरी जीवो तमे फीडबैक द्वारा तमरो वीकनेस स्ट्रेंथ जानिबा द्वारा तमे ताको केमिति मोटिवेट हे कि ग्रो करिवो तमरो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हबो लर्निंग स्पेयर रे तमे देखिबो एंड सेकंड जोटा होची नो फीडबैक रिक्वायर्ड टू गिवन फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें समस्त जानि जे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पई फीडबैक नेसेसरी विदाउट फॉर्मेटिव माने फीडबैक प्रॉपर फीडबैक जोटा हमें कहउचे कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक सेही फीडबैक बिना हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट वैल्यूलेस किछि माने नाही से बेस करे ही फीडबैक ऊपर ओके Next question, which of the following is not a tool to be used in formative assessment in the scholastic domain? Conversational skill, open-ended question, projects, classroom activity. भाभी चिंदी आंसर दियो पिला माने नो एटी आंसर हबो ऑप्शन ए कन्वर्सेशनल स्किल से कौन पचारछि एई तक भितरु नॉट ए टूल टू बी यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द स्कॉलास्टिक डोमेन कि क्लास स्कॉलास्टिक डोमेन माने तमर जोटा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहूची
तो इट्स ओके तपन तुम जो टीचिंग प्रोसेस रोच ओपन एंडेड क्वेश्चन तुम क्लासरूम रे यूज करूच ओपन एंडेड पिला मानू स्कोप दौच से क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन पचार से एक्सप्लेन करने इट्स ओके देन हूँ प्रोजेक्ट्सटा भी गोटे टेक्निक बा टूल हिसाब से क्लासरूम लर्निंग बा स्कॉलरशिप लर्निंग को एनहांस करने टीचर यूज करूँ एंड क्लासरूम एक्टिविटी जोटा है या अंडर तुम जो एक्सपेरिमेंट पिला माने रोचे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो कि कौन सी जिनस हो तुम गोटे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करी प्रोजेक्ट हो ग्रुप वर्क हो सब क्लासरूम एक्टिविटी उपर जीव किंतु कन्वर्सेशनल स्किल गोटे इनफॉर्मल हुए जोटा कि तुम कौन कहल कम्युनिकेशन प्रोसेस रे आसो किंतु सेटा गोटे टूल रे जीवनी सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके क्लियर समस्तंकर ओके मुकेश नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following is an effective strategy to promote assessment for learning option 1 encouraging competition among students option b providing opportunity for self reflection or goal setting option c using only close ended question option d focusing on the final grade rather than the learning process कोडा हबा Yes, option B is the correct answer. Providing opportunity for self reflection and goal setting. Next देखिबा कि what is the primary purpose of non-referenced assessment? Non-reference assessment रा primary goal रहउची कोन? To compare students' performance to a set of standard or to provide feedback for improvement or to support self-reflection and goal setting. Option D is to evaluate the effectiveness of instructional strategies. कोटा हबा पिला माने ओके आउ कई पिला माने रही गलो आंसर दियो टिके जल्दी जल्दी yes यार आंसर हम ऑप्शन ए टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड जेमती कि आम कहि परिबा तुमर एबे एग्जाम चली कि माने कोडा प्रिलिम हो कि मेन हो तुमको कंपैरिजन करा जाय डिफरेंट पिलांक सहित डिफरेंट स्कोर सहित कंपेराइज करिकि तुमर गोटे रैंक बाहर एंड तुमर सिलेक्शन लिस्ट जोटा बाहर दैट इज नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन टेस्ट बा असेसमेंट टेस्ट कौन स्टूडेंट परफॉर्मेंस देइछि पा देबा ओके नेक्स्ट कौन पचारे कि नॉन रेफरेंस असेसमेंट टिके नॉन रेफरेंस माने रुशांत होउची कि तमर कौन होता है कंपैरिजन बेसिकली जोठी कंपैरिजन थी तुम असेसमेंट बा टेस्ट रो स्टूडेंट मानकर किछि रैंक बेसिस रे तुमको जेतेबेले किछि गोटे ऑर्गेनाइज करा जाउची सेतेबेले नॉन रेफरेंस रा माने होउची तुमको किछि पिलांक सहित कंपैरिजन करा जाउ अछि ओके then which of the following is not an objective of formative assessment कि कोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नो टू नो अबाउट एडा पढ़ी सारी छे पिला माने रिपीट हे जाई छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज एडवोकेट बाय हुम जीन पियाजेट लेव वाइगर्स्की बीएफ स्किनर कोहलर किए रे बीएफ लिखला ओम प्रकाश सेठी yes option A is the correct answer जीन पियाजेट एक्चुअली एटी कंफ्यूजिंग पिला माने हबो क्वेश्चन फ्रेम टा सेमती हेची कंस्ट्रक्टिविस्ट आसिले ती जनकर आसी परिबो लेव वाइगर्स्की एंड जीन पियाजेट जदि तुमको एटी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट पचारिछि ताले जीन पियाजेट एंड जदि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पचारिछि ताले होची कोन ना लेव वाइगर्स्की तो क्वेश्चन फ्रेम ही गलत अछि यस ए एंड बी एटी दुई जण हेबे ओके नेक्स्ट देखिबा कि a scoring rubric is a set of criteria and standards typically linked to learning objectives that is true false or partially correct or partially incorrect
Yes, option A is the correct. It is true. Next jiba. Next question देखा. Constructivism is not associated with what? Construct new knowledge through past experience, promotes active learning or learning by doing, teacher as a facilitator, restrict discipline. आराम से जाने हो चाहिए न पढ़ते हुए भी कर दो ना रे. Yes, option D is the correct answer. Strict discipline. Next jiba कि collaborative learning refers to what? A group of students work together or a group of students discussing together. Option C, students from different school working together over e-learning. Option D, all of the above. All. Yes, all of the above is the correct answer. All of the above पढ़ला माने छुआ मानकर खुशी कहले न सरे. Metacognition refers to the ability of understanding, controlling and manipulating the cognitive strategy. It is true, false, cannot say or none of the above. अच्छा ट्रू जो मैंने कहूच मत कह ट्रू केमती हम सबू वर्ड कहला को पिला माने देख कि से देछि अंडरस्टैंडिंग देछि कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग. मेटाकॉग्निशन द्वारा तुम मैनिपुलेट करिवो जिनसटा को. मेटाकॉग्निशन माने अंडरस्टैंडिंग. पार्शियली करेक्ट भी एठी हबनी एठी फॉल्स ही हब. देख तुम वार्डिंग ही दे दबो जदी गोटे क्वेश्चन ने गोटे भी वार्डिंग देछि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग माने तुम क्रिटिकली गोटे जिंस को थिंक करबो. थिंकिंग ओवर थिंकिंग तुम से जिनसटा को थिंक करी चलिबो. गोटे अवेयरनेस अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस कि केते करेक्ट नाही ना कि तुमर अंडरस्टैंडिंग हबो ना कि तुम मैनिपुलेट करि परबो. बुझीला तो वार्डिंग देखिकी तुम आंसर हो. जदि गोटे वार्ड भी नहीं ताले पार्शियली भी करेक्ट हबनी. गोटे वार्ड रू तुम बुझी गलानी नाही माने इट इज फॉल्स. ओके देन नेक्स्ट चलो. असेसमेंट एज लर्निंग एम्फसाइजेस व्हाट? कहूची मुक्ता मुकेश कैनट से अच्छे किंतु फॉल्स जोड़ी अच्छे तुम कैनट से कहीं मारिबो कि असेसमेंट एज लर्निंग एम्फसाइजेस व्हाट? स्टूडेंट्स रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू देयर लर्निंग एंड असेसमेंट. स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन फ्यूचर लर्निंग. लर्निंग एज इट ओहो ऑल द एबव लास्ट अच्छी कि सेथि लगे ऑप्शन डी आसलानी. मु कहली क्वेश्चन न होण पिलांगर ऑप्शन डी केमिति बाबा से पूरा खुशी है कि सागर ऑल लल पूरा करिकी कौन दे सरलेनी. Yes, option D is the correct answer, all of the above. Then next, task teaching is sometimes called as station teaching, work teaching, practice teaching, individualist teaching. कौन होगा? Yes, अक्षय ऑल अच्छी माने ऑल पचे के ऑल टा भूल ही जाऊ. तुम माने केबे गोटे परीक्षा रे एमिति दबा दरकार जोठी ऑल टा भूल हबा तापर तुम मैंने बुझब. सी स्टेशन सी जो माने स्टेशन लिखुच तुम आंसर जना कि ना ना सेमती न हो एमती हवा दरकार. सेमती हेले ही तुम माने एनालिसिस करवा जानिबो. ओके तो यार आंसर होची ऑप्शन 1 स्टेशन टीचिंग. टास्क टीचिंग रा माने पिला माने मने रखता हो. स्टेशन टीचिंग
गवर्नमेंट ऑप्शन ऑल भूल हबनी अरे बापा एते कॉन्फिडेंस इप्सिता पूरा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट ऑप्शन भूल हबनी पूरा जेमते गवर्नमेंट कोटा भलिया ओके ओके ठीक अछि स्टेशन टीचिंग पिला माने होचे कि जते बेले तुमे आज ए टीचर मु तुमको किछि ओडे ग्रुप टीचिंग करछि टैक्स प्रोवाइड करछि स्टेशन माने किछि ग्रुप करिके किछि टैक्स प्रोवाइड करछि असाइन करछि तुम मानकु तो सेटा होछि स्टेशन टीचिंग एंड तुमे माने ई स्टेशन को मु किछि वर्क असाइन कली एंड तुमे सेही वर्क को कंप्लीट करिवो तो सेटा होछि स्टेशन टीचिंग जोटा होछि कि टैक्स टीचिंग मु तुम मानकु किछि जण को किछि वर्क प्रोवाइड कली बा ग्रुप ऑफ पीपल को किछि क्राइटेरिया फिक्स करी हमें जो ग्रुप लर्निंग कहते 4 जण 5 जण बा 2 जण को नहीं कि हमें गोटे टैक्स प्रोवाइड करछे कि एतिक टाइम भितर टैक्स टा कंप्लीशन करिवार अछि तेनु से टैक्स टीचिंग को स्टेशन टीचिंग को जाय स्टेशन भली बा ग्रुप भली से जिंसटा को करा जाय थाए सागर तमे तमरो डेफिनेशन बाहर कर देला ओके ठीक अछि ओके एबे लुसिना सुनी देला ना चादी परीक्षा रे आसे त मु भाबुची मो छुआ मनकर किछि बे प्रॉब्लम हबनी टैक्स टीचिंग माने कोन स्टेशन टीचिंग तमे आराम से करि परिबो तमे तमरो लॉजिक लगे के ओडा आंसर देला कोन इट्स ओके केबे सुनी नथिली स्टेशन ठीक अछि देन कौन हो इफेक्टिवनेस ऑफ पिला माने जदि भी कहार किसी डाउट रोचे आउ थे जानवा को चाहूच है तो तुम मैंने खातार नोट करी जिते बड़े आम क्लास मैराथन सेशन सर से मत एक्स्ट्रा डाउट जहाँ रोचे पचारि पार ओके इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज मोर व्हेन देयर इज द यूज ऑफ वर्ड्स वर्किंग मॉडल्स कलर स्लाइड्स प्रोजेक्टर कौन एक्सकर्शंस कौन हम पिला माने effective of teaching is more when there is a use of कोटा हबो सब डेडी देलानी आउ एट द आइला एठी ऑल द अबव ऑप्शन नहीं ऑल ऑफ द अबव तो आंसर हो एठी वर्किंग मॉडल से पचर से कोन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज मोर when there is the use of एटी टीचिंग कथा कुआ जाई छी लर्निंग नो टीचिंग वर्किंग मॉडल आज ए टीचर मु केमिति पढ़ेइले तम माने पढ़िबो तमो किसी मॉडल यूज कले ना मु डायरेक्ट एक्सकर्शन नै जबी तम माने एक्सकर्शन ने जाई कि बसी की पढ़ी दबो फील्ड ट्रिप रे प्रोजेक्टर एक्सकर्शन ने त सेथि लागि ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन होची सेटिंग गोल्स एंड कौन गोटे है शुभस्मिता कहीं मुह सुखे देला ओके कहे कि समस्त मुह सुखी गला तो देखो सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग ऑकर्स इन व्हिच फेज ऑफ टीचिंग प्री एक्टिव एग्जिट फेज इंटरएक्टिव पोस्ट एक्टिव फेज pre yes pre-active phase is the correct answer next ba which of the following is the right combination for initiation of education ceremony muslims पब्जा और बुद्धिज्म बिस्मिल्लाह खानी और हिंदू उपनयन मुस्लिम उपनयन कोडा बा कौन ए बी सी डी दे देलानी तार माने होची कि एजुकेशन ग्रहण करिया पई जो रूल टा थाए एटा को रिलीजन सहित तांकर रूल टा कॉम्बिनेशन अच्छी डिफरेंट रिलीजन दिया है बेसिकली हिंदू मुस्लिम एंड बुद्धिज्म तो को रिलीजन सहित एजुकेशन टा ग्रहण करिवार को प्रथाटा अच्छी ओके एटार आंसर हम हिंदू उपनयन एबे बुझाई देला परे आराम से समस्तंकर सी सी आसुची हिंदूर उपनयन माने हिंदू मानकर थाए आगु काल रे थिला कि व्रतकर हेबा परे उपनयन हेबा परे एजुकेशन प्रोवाइड करा जाउ थिला एटा गोटे तुम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड रो ओके ठीक अच्छे सीधा किसी कथा नहीं एबे जानो
एबे जानिले परीक्षा रे जदी बाय चांस भी तमरा किछ क्वेश्चन आछि माने देखो तमे आउट ऑफ जेते जानुछ तुम मानक पई भलो काहे कि ना हिंदू अच्छी माने मारी चलो ओ भाई नाइस तो से जिनसटा हो कि तुम एबेठू जानिबा को ट्राई कर जदि एबेठू जानुछ एग्जाम रे जदि सेमती किछि ट्रिकी आसुची तुम करि परिबो तो अपन सब ऑप्शन ने देख ए सब ऑप्शन गुडा करे मुस्लिम रो जो पब्जा लिखा है तार मानेटा होची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन सेरेमनी गुडे एजुकेशन सेरेमनी करिया पई कोटा राइट ऑप्शन तो एठी हमर रिलीजन दियाला मुस्लिम बुद्धिज्म हिंदू पुनी मुस्लिम तो एठी दियाला सेरेमनी गुडा कोन करा जाय पब्जा सिस्टम गुडा अच्छी माने रिचुअल्स जेमि हमर उपनयन माने जोडा तुम करछ व्रत घर तुम करूछ हिंदू मानकर उपनयन रहिला बेले सेमति रहूची पब्जा बिस्खान खानी एंड उपनयन मुस्लिम मानकर दिया है ये गोटे गोटे सेरेमनी दिया है किंतु सही सेरेमनीटा रियली कौन अटैच करुच्चे कि सही सेरेमनीटा हवा द्वारा तो तुम मुस्लिम मानकर पब्जा सिस्टम भी अच्छी किंतु सेटा हवा द्वारा तुम एजुकेशन इनिशिएशन हुए ना तो ये जेहेतु देसी तुम कौ सिस्टम बा कौ रिचुअल्स द्वारा कौ रिलीजन सहित तुम एजुकेशन इनिशिएशन होता है तो राइट आंसर हम हिंदूर उपनयन ओके सहीटार आइडिया नहीं मु देखिकी नेक्स्ट क्लास रे निहाती कहबे ओके देन हेंडरसन बिडली हरमैन एंड अदर्स आर एसोसिएटेड विथ को सहित एसोसिएटेड इंग्लिश मॉडल्स ऑफ टीचिंग और साइंस मॉडल ऑफ टीचिंग मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग कोटा हबा आम एमती क्वेश्चन पचारे माने लगे मुंड उपर उड़ेला भाया यहाँ तुम गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड यहाँ मुझे सर्च करी कौन हम एक्सप्रेशन आसला समस्त ओके ठीक अच्छे तो जेहेतु यहाँ स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टीचिंग यही पीपुल माने यही लोक मैंने एसोसिएट थिले मैथमेटिक्स टीचिंग यही गुड़ाक हूँ स्टैटिक क्वेश्चन पिला माने यस तो अपन आउट ऑफ सिलेबस तुमको गोटे क्वेश्चन किसी गोटे पचारि दब तो ये आउट ऑफ सिलेबस भी एग्जामिनेशन मझे मझे आसी जाऊँगी सो दैट बास तुम मन रखी था कि यहाँ गोटे रिवाइज करदेव कौन कर एग्जामिनर क्वेश्चन पचारे तो तुम कहीपरि ना यहाँ आउट ऑफ सिलेबस बोली कि जदि न जानी भी से स्किप कर बाध्य जदि काले रिपीटेड हो पारे क्वेश्चन सो दैट देन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज मोर बाय यूजिंग प्रोजेक्ट्स और एडा पढ़ी थे पे रिपीटेड है ओके क्वेश्चन देखा सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग स्ट्रेटेजीज okay which of the following can be considered as an formal agency of education ए भितर कोटा formal agency newspaper cinema radio और museum क्वेश्चन समस्ते पढ़िबो एंड भाबी चिंतिक आंसर दो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने एई चारटा भितर कोटा फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन यस जो माने ऑप्शन डी दोच करेक्ट आंसर म्यूजियम पिलाने देख ये सब इनफॉर्मल एथि हम न्यूज पेपर एंड फास्ट कहीदे म्यूजियमटा कहीं हम कहीं म्यूजियमटा तुम टीचिंग लर्निंग सिस्टम सहित आसोसिएटेड कहीं तुम बहुत तुम बुक्स रे किसी किसी जो आम सोशल साइंस पढ़ुचे से म्यूजियम कनसेप्ट थाए म्यूजियम थ्रो रू भी तुम गोटे इनफॉर्मल लर्निंग पाई पार यहाँ गोटे नॉन फॉर्मल टीचिंग एजेंसी जोटा कि क्लासरूम भितर फोर वॉल भितर हुए ना किंतु एथिलागी जिनसटा होची कंसीडर्ड एज फॉर्मल एजेंसी कहीं ना एटा टीचिंग बा लर्निंग सहित रिलेटेड सेथिलागी ओके बुझियला समस्ते कहीं ऑप्शन डी म्यूजियम हम जेहेतु म्यूजियमटा टीचिंग सहित कनेक्टेड रही टीचिंग प्रोसेस रे एडेड म्यूजियम कॉन्सेप्टटा लर्निंग हेल्पफुल पाई सेथिलागी यस आशा नेक्स्ट आहरी बहुत भल भल क्वेश्चन अच्छी
To which of the following agencies do the press, the radio, the television, the public library and the cinema belong? Active agencies of education, formal agencies of education, passive agencies of education, informal agencies of education. कोटा हवा? अच्छा पिला माने मते समस्ते इनफॉर्मल कहूच एबे तुम माने टिके एक्सप्लेन कर इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन मीन्स व्हाट तापर हमें आंसर डिस्कशन करबा इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स व्हाट इनफॉर्मल एजुकेशन क्षेत्र रे कोन आसीबो ओके मौसमी फॉर्मल एजेंसी तो सब हबनी लुसिना प्रियदर्शिनी तो तुम जो माने भी इनफॉर्मल कहिछ मते फास्ट एक्सप्लेन करो व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल एजुकेशन रूपाली कहले एक्टिव हम इनफॉर्मल मीन्स कौन जोटा कि तुम पेरेंट्स कठू कि सोसाइटी रू जो एजुकेशन टा एक्वायर करूच जोटा पई गोटे फोर वाल ऑफ लर्निंग सिस्टम नथिबो दैट इज इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम बुझिएला गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस यस पब्लिक लाइब्रेरी तो तुम इनफॉर्मल सोर्सेस नुआ ना पिला माने नॉट एसोसिएट विथ एजुकेशन पब्लिक लाइब्रेरी टा तुम को एजुकेशन सहित तपन एसोसिएट नुआ केमिति इनफॉर्मल कहूच यस डी कन्फर्म टा केमिति ओम प्रकाश कि पब्लिक लाइब्रेरी तुम एजुकेशन सहित तुम लर्निंग सहित एसोसिएट नुआ कि तो एटी आंसर हम पिला माने सी पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मो वॉइस टा ऑडिबल होउची कहीं ना देख कि तुम्हें टेलीविजन जिते टेलीविजन ने पिला माने मध्य तुम एजुकेशनल चैनल रे तुमको एजुकेशन प्रोवाइड करा जाई थाए तुमको जो एजुकेशन टा प्रोवाइड करा जाउची बा तुम एजुकेशन एक्वायर करूच हैला तो सेटा तुमरो केमते एडी पैसिव भी अछि ना तुम पैसिवली एक्वायर करूछ जोथरे कि केवल तुमको गोटे वन वे कम्युनिकेशन सपोज एबे तमरो मोर सेठी इंटरेक्शन हो न थांदा केवल मु कहू थांदी एटा गोटे फॉर्मल एजुकेशन स्टिल एटा कोन हो जाय थांदा एक्टिव प्रोसेस न हे कि गोटे पैसिव प्रोसेस हो जाय थांदा आ जोटा रहिला पब्लिक लाइब्रेरी तो ए लाइब्रेरी एटा गोटे फॉर्मल एजुकेशन भितरे हेई थाए गोटे टीचिंग सहित लाइब्रेरी को तमे को मोटिवेशन ने दाई था कि लर्निंग एक्वायर करबा पई किंतु एटा पैसिव कहीं ना से एक्टिव प्रोसेस न थाए केवल तुम टीचिंग बही तक थाए एंड तुम्हें तुम ओन बही कि नोट तुम्हें निजे पैसिवली तुम पढ़ी था से कौन एक्टिव इंटरेक्शन न थाए एंड रहा कौन रेडियो एंड प्रेस तो ये सब जो एजुकेशन पाउच तुम गोटे वन वे एजुकेशन पाउच ए सब जिन इनफॉर्मल जीवनी मु तुमको प्रीवियसली भी कहली जोटी गोटे वार्ड अच्छी तुम मैंने नीचे कहल कि जोड़ा एजुकेशन सहित रिलेटेड है नथिबो किंतु पब्लिक लाइब्रेरी नुआ कि तुम एजुकेशन सहित रिलेटेड नुआ एंड टेलीविजन जो एजुकेशनल चैनल आसूची कि तुम टेलीविजन ए जो फिल्म टा देखि दउछ सेटा कथा नुह तुम जो एजुकेशनल कंटेंट देखुछ तुम सीरियल देखिदबा सेटा नुह कि तुम गोटे एजुकेशन पाइल सीरियल केवल कोटा झगड़ा होची कोठी प्रेम होची ए सब छाड़ा ए सब जिन ही पाइब किंतु टेलीविजन जो एजुकेशनल कंटेंट पाउच सेटा हबम यस ओम प्रकाश किंतु एटी क्वेश्चन हिसाब रे एटा पैसिव हे परबो एक्टिव पैसिव भी हे परबो इनफॉर्मल जेहेतु पब्लिक लाइब्रेरी अच्छी ओम प्रकाश सेथि लगी ही हबनी कहीं ना पब्लिक लाइब्रेरी इनफॉर्मल एजुकेशन ने जाऊ नाही जदि तुम न तुम्हें डायरेक्ट इनफॉर्मल बोली मारी दे पारि थांतो अरुष्णा जगत जोटा एक्टिव लर्निंग प्रोसेस कहि परिबो तुम जो इंटरेक्शन बा कम्युनिकेशन प्रोसेस बेटरली हे पारुछि
तथापि ओम प्रकाश मु ए जिनसटा आउ थरे विथ क्लैरिफिकेशन तुम मानको विथ प्रूफ देखाई देबी जहाँ भी तुम मानकर डाउट रोची यस आई नो दैट कि फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल अच्छी किंतु कहीं पैसिव होची विथ एक्सप्लेनेशन मु निश्चित भाव में तुम मानको कहबी ओके एबे तो मु आनी नहीं ना मु विथ प्रूफ आनी कि तुम मानको देखेबी कहीं एटा पैसिव हैला एंड कहीं एटा इनफॉर्मल हैलानी तो सेते बेले तुमरो क्लैरिफिकेशन हेई परिबो जोटा एबे टिके मु कम्युनिकेशन माध्यम रे कहले तुम मानको हुए तो क्लियर हेई पारु नाही तो एटा कोन हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसटीआई पॉलिसी 2013 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years to provide fund for basic education to promote business schools to attract talented and bright minds towards career in science research and innovation अच्छा पिला माने एसटीआई रो फुल फॉर्म कोन समस्त डी लिखि दो जे एसटीआई रो फुल फॉर्म कोन व्हाट डू यू मीन बाय एसटीआई आगे एसटीआई को तब ऑप्शन डी को जीव एठी देला कि एसटीआई पॉलिसी 2013 ताले से एसटीआई पॉलिसीटा कोन तपन यूट्यूब वीडियो जोटा पैसिव एजुकेशन कही हब माने जोठी तुमर इंटरेक्शन हो नथबा माने टीचर तुमको रेस्पॉन्स तो होने तुमे बहुत चैनल एमते भी अछि बहुत जगह रे केवल यूट्यूब रु तमे जो एजुकेशन ना आनो सेठी तुमर किछ गोटा एक्टिव इंटरेक्शन न थाए तमे किछ क्वेश्चन आंसर कहि पारु ना हो किबा तमे किछ डिस्कशन ने पार्टिसिपेट करि पारु ना केवल टीचर से जे कोनसी कंटेंट भी हो तुमर एजुकेशनल हो किबा एजुकेशनल बाहर हो कोनसी जिंस तुमको टीच करूछन एंड तमे पढुछ एंड सेही जिंस रे इंटरेक्शन नाही ताहाले सेटा को पैसिव मध्य कहि पारिबा साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन यस मौसमी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मनोज यस तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एंड ब्राइट माइंड्स टुवर्ड्स करियर इन साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन तो एसटीआई रो फुल फॉर्म होची साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ओके बुझला समझते yes option D is the correct answer yes तमर लाइव क्लास टा एक्टिव रे जीवो काहेकि न तुमे एक्टिवली एबे डिस्कशन करूछो तुमे मते किछि भी डाउट पछारुछो मु क्लैरिफाई करि पारुछो एंड मोर डाउट किबा मोर क्वेश्चन आंसर तुमे देई पारुछो ओके आरके साहू वेलकम एंड क्वेश्चन आंसर रे पार्टिसिपेट कर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक of learner centric learning कोटा learner centric learning रा characteristic नुहा teacher and student evaluate learning together teacher leads to increase students learning and long term retention C approach is compatible with interdisciplinary investigation option D emphasis is on communicating knowledge effectively कोटा हबा yes option B is the correct answer teacher leads to increase students learning and long term retention LTR एग्जाम होची हाई स्कूल टीचर पई तमरा and then होची नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not a merit of learning centered approach learning centered approach रो कोटा गोटे मेरिट्स नुहा ऑप्शन ए learners find interest in learning it fosters in learners a sense of cooperation option C students mostly depend on teachers option D emotional problems of learners are probably channelized कोटा हबा पिला माने yes option C is the correct answer students mostly depend on teachers next देखिबा कि नेक्स्ट क्वेश्चन होची which one of the following is not related to child centered teaching and learning option A emphasis on learning experiences
emphasis on holistic development, emphasis on self learning, emphasis on classroom teaching. एगुड़ा हूँ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जोगुड़ा कि तुम जेकोसी भी टीचिंग एग्जाम हो ओएसटीटी ओटीटी एलटीआर किंबा किसी भी हाई स्कूल टीचर कौन सी जगह जो भी सीडीपी क्वेश्चन तुम आसूची से हेल्पफुल सो दैट ये क्वेश्चन गुड़ाक से लगे डिस्कसन हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. Yes, option D is the correct answer. Emphasis on classroom teaching. कहीं चाइल्ड सेंटर रे लर्निंग एक्सपीरियंस को फोकस करा जाए देन पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट ऊपर फोकस रखिक चाइल्ड सेंटर लर्निंग टा इंट्रोड्यूस करा जायछि. देन होची एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग पिला माने निजे निजे पढ़ी कि निजर डेवलपमेंट केमिति करि परबे थ्रू सेल्फ लर्निंग से विषय रे मध्ये फोकस करा जाई अछि. देन देखिबा which is not related to child centered education. कोटा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सहित रिलेटेड नुहा. Teachers acts as the facilitator of learning. Teacher teaches through question answer method. Option C, the child is the center of learning. Option D, learning is based on child experience. Yes. Yes, option B is the correct answer. Teacher teaches through question answer method. जेहेतु child center learning तो ये टीचर कर मेथड किसी जोड़ा टीचर सेंटिक मेथड सेटा यूज हबो नाही तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is teacher centered teaching learning process? कोटा टीचर सेंटर्ड. ऑप्शन ए, टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. ऑप्शन बी, टीचर एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. ऑप्शन सी, टीचर सुपरवाइजेस द लर्निंग एक्टिविटीज. ऑप्शन डी, टीचर हेल्प्स द लर्नर टू गैदर एक्सपीरियंसेस. कोटा हवा पूरा जोश रे समस्त 5-6टा बी लिखि दउछंदी. बाबा श्रुति प्रभा खटुआ सी पूरा रेड रे हाईलाइट करके दी. यस, B is the correct answer. Teacher explains with the help of teaching learning materials. Okay. आसरानी C हबनी B हब. Then next देखिबा, the experimental learning propounded by Rogers refers to what? Content centered, teacher centered, learner centered or program centered. आर के साहू किसी पढ़ी न कह सब तो बढ़िया आंसर दौच कौन. यस यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज लर्नर सेंटर्ड. क्लियर. नेक्स्ट बा एतिर जना पइला जो पिला माने मु पढ़ी नि कहि तांती से माने छुपके सब पढ़ी थांती. समस्त सब बेले सांग मन को हैरान करिया पई एग्जाम रे केते पढ़ देचु ना मोर सॉरी नी. ये हले सही काटाइरो मैम मोर सॉरी नी किंतु मु सब ठीक आंसर कहूची. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड लर्निंग. कोटा टीचर सेंटर्ड लर्निंग नुहा. लर्निंग बाय डूइंग, एक्सप्लेनिंग, डिस्कसिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग. Yes, option A, learning by doing. Then देखिबा, which one is not associated with the role of a teacher? Facilitator, philosopher, friend, administrator. कोटा बा पिला माने सुखमान कोटिया.
तो ये ऑप्शन डी हम पिला माने टीचर जने फैसिलिटेटर हे पारिबे फिलोसोफर मध्ये हे पारिबे फ्रेंड गाइड हे पारिबे किंतु टीचर जी एडमिनिस्ट्रेटर सी नुह टीचर का रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर का रोल पूरा डिफरेंट थिंग ओके मैम ये गुड़ा को एग्जाम पाई मु तो किछि जानि पारुनी आपण किछि जानि पार ना किंतु आपण सब क्वेश्चन आंसर दे पारु छथि तो बस एथिरे लागि रुहंदु केमते बेस्ट आंसर देबे नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज व्हाट टू प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड नॉलेज टू फैसिलिटेट द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल ऑफ द अबव एबे तो ऑल ऑफ द अबव आसीबो किए जाने कहते जमी गवर्नमेंट माने स्टाम्प बड़ा क्वेश्चन आंसर ऑल ऑफ द एबव yes option D is the correct answer all of the above next देखिबा कि learning is dash process lifelong continuous both A and B none of the these yes the question is learning ro characteristics ro जोटा कि learning is a lifelong and continuous process also yes mausimi next a teacher teaching decimals asks student to visit supermarkets and compare prices to household items this is an example for what using alternative assessment to corroborate conclusions based on the test scores or involving parents and community in learning innovative adoption of new topics to generate interest making assessment more interesting than usual malo sorry पिलाने ऑप्शन ए जो माने कहूछ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यूजिंग अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड गोटे कंक्लूजन ड्रा करबा पई टेस्ट स्कोर रे एटा होजी गोटे अल्टरनेटिव मेथड तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पिला माने ऑप्शन सी हबनी इनोवेटिव अडॉप्शन ऑफ ए न्यू टॉपिक टू जनरेट इंटरेस्ट एटा हबनी से कोन दे जे टीचर टीचिंग डेसिमल आस्क स्टूडेंट टू विजिट सुपरमार्केट्स एंड कंपेयर प्राइसेस ऑफ हाउसहोल्ड आइटम्स दिस एन एग्जांपल ऑफ माने कोन से अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड पिला माने केते बुझी छंदी जानि छंदी के ना नाही सेही जिंसटा से यूज करि छंदी कि डेसिमल पढेबा पूर्वरु निजे जाई कि सेही जिंस सहित गोटे अल्टरनेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट पिला मानकर जेमिति हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट रे पिला माने देखिजे फास्ट गोटे कांसेप्ट पढेबा आगुरु मु किछि गोटे उपाय रे त माने ई जिंसटा को केते बुझिजो कि नै धर मु थ्योरी ऑफ लर्निंग पचारुची तमको किछि गोटे एग्जांपल देई कि जदि मु प्रीवियस नॉलेज रु एई नॉलेज को आनी पारिली ताहाले मु तमको असेस करबी ना गोटे अल्टरनेटिव मेथड डायरेक्ट एटा होची कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी न कहे कि गोटे अल्टरनेटिव मेथड द्वारा मु तमको असेस करि पारिबी बुझेला ता अनुसार मु तमको स्कोर देबी एटा चदे टीचर गोटे एग्जांपल लेके डायरेक्ट पढ़ाई दे थांते पचरा हे थांदा ताले न्यू एडॉप्शन हे थांदा बुझियला टीचर एडी पढ़ो ना एठी असेस करू छंदी सेति लगे हेबो अल्टरनेटिव मेथड टू असेसमेंट फॉर स्कोरिंग प्रज्ञा बुझियला देन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ असेसमेंट इन एनी फॉर्म Teachers uses to group the class based on the individual scores of children. The scores are compiled only for documentation necessities without using it. A teacher compares class test score with standardized test and observation to improve teaching. Or the scores are compiled and neatly presented to the principal and other authorities. कोटा हबा पिला माने ना मैम साइड हेबे नि मैम मझरे ठिया हेबे प्रज्ञा तुम कांद कहीं बाहर
yes एठी ऑप्शन सी अब टीचर्स कंपेयर्स क्लास टेस्ट स्कोर्स विथ स्टैंडर्ड टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू इंप्रूव टीचिंग से कौन क्वेश्चन बचा गुड स्ट्रैटेजिक यूज फॉर असेसमेंट इन एनी फॉर्म तो एटा हबो कंपेयर्स क्लास टेस्ट स्कोर्स विथ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सेटा कंपेयर कले ही टीचर सिस्टमैटिक जिनसटा जानि पारिबे देन तापरे कोन हम इंप्रूव टीचिंग करिवे काहे के एते हस लागुची को कथा लागई ठीक है शेयर कर हम सहित तमे एते काहे के हसिला से आर के कथा सुनिगी ना अलगा किछि नेक्स्ट होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कि असेसमेंट फाइंडिंग्स कुड बी बेनिफिशियल टू ए स्टूडेंट्स लर्निंग इफ द टीचर generates right amount of seriousness and tension towards the test. Assessment scores are properly interpreted by statistical analysis. C. Assessment activities are aligned with instructional objectives. D. Tests are conducted in strict condition around uniform. कोटा बा पिला माने Yes, option C is the correct answer. Assessment activities are aligned with instructional objectives. सेते बेले जाई कि सेटा beneficial हेई पारिबो. Okay, next बा कि in order to reduce subjectivity and increase transparency in scoring oral presentation and speeches एटा बोधे पिला माने पढी थिले rubrics सब पुन थरे रिपीटेड हेई जाई छि. Next question देखा A questionnaire seeking students reflection on their progress in their lesson including how they feel is a okay components and sorry पहले माने मझरे मझरे गोटे गोटे क्वेश्चन रिपीटेड हो जाई छि तो एटा देखो components and variables of an assessment system include all of the following expect को variable दा assessment system रे include होउछि the purpose clarity type of task feedback intelligence modernization सॉरी मॉडर्नाइजेशन नुह पिलाने मॉडरेशन आखि को तो देखाओ ने हम कौन करी बी 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 डी ई सी बी पिला माने एडी ऑप्शन ए करेक्ट हबो components and variables of an assessment system includes all of the following expect अच्छा expect पचारि छी purpose रहिबो क्लारिटी रहिबो ना ना जो माने बी डी ई कहउछ करेक्ट आंसर पिला माने डी तो हबनी पिला माने पर्पस रहिबो रु आउथरे कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स कोन आंसर मॉडरेशन न हे पारे बट आउ सब तो रही परिबो पर्पस रहिबो असेसमेंट रे देन रहउची कि असेसमेंट रे आ गोटे जिंस रहउची टाइप ऑफ टैक्स रहिबो सी रहिबो देन फीडबैक रहिबो देन मॉडरेशन मध्ये रहिबो मॉडरेशन केमिति रहिबनी असेसमेंट जो क्वेश्चन तमे प्रिपरेशन करूछ ता देह रे पिला माने तमे मॉडरेशन करिवो तो एठी ही तार ऑप्शन नाही बी एंड ई हबनी पिला माने केवल डी एठी रहिबनी बी एंड ई हबनी डी हेई परिबो असेसमेंट रे फीडबैक रही परिबो से पचारि खाली कंपोनेंट्स नो वेरिएबल भी पचारि आर के वेरिएबल ले सेटा रहिबनी यस ऑप्शन राइट नहीं ठीक अच्छे छाड़ी दियो सहीटा देन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इवैल्यूएशन एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कोटा रहुची कि प्लान फॉर द न्यू द होल ईयर अहेड exhaustively that includes summary sheets description and objective scores and design a plan that allows for test preparation holidays and evaluation periods for the proper correction create test logs diary reflection sheet along with students
journals, parental observation and record of behavioral changes, or option D, have a list of student performance of the previous years and allocate them into a separate groups. कोटा हबो अरे बाबा न पढ़ी सारण आंसर आगे साउ तो आग 10टा आंसर पूरा फुल कर दियो. Yes, option C is the correct answer. Create a test logs, diary, reflection sheet along with student journals, parental observation and record behavioral changes. तो जो मैंने ऑप्शन सी कहूछ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यस नेक्स्ट बा कि इन असेसमेंट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ए टीचर कुड कंस्ट्रक्ट. टीचर कौन कंस्ट्रक्ट करेंगे ना एन ओपन बुक टेस्ट और ए प्रोजेक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग द अल्टीट्यूड ऑफ ए बिल्डिंग और ए टेस्ट दैट गेट्स द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरम और एन असाइनमेंट टू कंप्लीट एन exhaustive list of questions on the topic. कोडा हो पिला माने एटा जो माने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थिबो सेही माने ही कहि परिबो बढ़िया से. आंसर दिया समस्या टिके जल्दी जल्दी. पद्मजा सी. ओके yes option B is the correct answer. A project of estimating the altitude of building. तो आम ता द्वारा गोटे बिल्डिंग रो लेंथ तमे जानी परिबो. तमे जहाँ मेजरमेंट स्किल गोटे बिल्डिंग पई कोन दरकार केतिकी मेजरमेंट रे तमे करूच गोटे बिल्डिंग रो कंस्ट्रक्शन सेही जिनसटा जते बेले जानी परिबो. पाइथागोरम रे मध्ये तमे बिल्डिंग रो हाइट जानी परिबो अल्टीट्यूड तार केते अछि सेही जिनसटा तमे बिल्डिंग थ्रो एग्जांपल थ्रो रे तमे पाइथागोरम थ्योरी आराम से बुझी परिबो. ओके आमे कोन एते गणित टीचर गणित टीचर न मते कहले गणित बुझी. Collaborative testing by Philip Zimbrado clearly shows that testing has to be designed by an outside agency. Testing is never valid as it will always have subjectivity. No test can ever rely on so separate entrance tests are to be conducted. Option D, when partners take tests, they not only study the whole but also experience less anxiety. कोड हवा एबे सुबिला पिला माने एबे सुबुची ना सुबुनी एबे वॉइस क्लियर अछि. ओके ठीक अछि. एबे कुह ए भितर कोटा हबो. आई थिंक एटा जानि नथिबो केही. ओके यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी. when partners take test they not only study the whole but also experience less anxiety. जेते बेले पार्टनर हे कि तमे किछ गोटे स्टडी भी करूछ सेते बेले तमा एंजाइटी लेवल टा जोटा तमा ग्रुप लर्निंग रे जोटा तमा सिंगल लेवल ले एंजाइटी अधिक थाए स्ट्रेस अधिक थाए किंतु जेते बेले पार्टनर हे कि तमे पढुछ सेते बेले तुमरो लेस एंजाइटी थाए. तमे संपूर्ण न पढी पारा होल टा को कंप्लीट न कले भी तमरो एंजाइटी लेवल लेस थाए जोटा कि कुआ हेछि कोलैबोरेटिव टेस्टिंग. एटा देखो त ना नु ही कुआ होछि जेते बेले तमे पार्टनर बा ग्रुप है पढ़ुच कोलैबोरेटिव टेस्टिंग केवल तांको नाटा दिया है ता अनुसार कोन होउची तमे जदि जानि नबे एठे गोटे गेस कर देबा पाला अछि. ओके the skills of collaboration, problem solving, decision making and communication are assessed by learning that occurs during project work, during college education, only while inventing a new concept, only while one is solving international concerns. कौन हम? Yes, Pragya.
ये ऑप्शन 1 जो माने कहू ऑप्शन ए करेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वर्क प्रोजेक्ट वर्क नहीं कोलाबोरेशन थाए प्रॉब्लम सॉल्विंग हे थाए देन आउ कोन रहला डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन बेटर हे थाए गोटे प्रोजेक्ट वर्क रे ओके then question hochi Rita taught a new concept to her class okay she observed her class in their process of learning she collected feedback on their learning tried to enable their learning to their maximum capacity with her teaching learning strategies Rita is involved in which process improvement assessment learning comprehending आंसर दिया टिके जल्दी जल्दी पिला माने रूपाली बी ओके निरंजन ऑप्शन बी होची असेसमेंट पिला माने का को क्लास बोरिंग लागुच कि के बोरिंग फील करूछ टिके काइंडली रेस्पॉन्स दबो बोरिंग लागुच स्ट्रेसफुल लागुच ओके जाको बोरिंग लागुच नी क्लास कंटिन्यू करा आ जदी तुम का को बोरिंग लागुच तमें क्विट कर जा पर जेबे तुमको इच्छा हे तमें सेबे आराम से बसी की देखिबो आ कोन करबा गोटे आरंभ करछ माने सही जोश रे तो सारीबा ना तुम माने एमती जदी जोश सरे तब मोर भी आ जोश की कॉन्फिडेंट रहिबनी ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कौन कहलो समस्ते सी 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 पिला माने एठी नॉमिनल स्केल भी हबो ऑर्डिनल स्केल भी हबो रेशियो स्केल भी हबो इंटरवल स्केल भी हबो तो ए बी डी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझियला चारटा कन्नो स्केल ऑफ मेजरमेंट गोटे पिला माने अछि तो तार क्राइटेरिया रहिछि नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो चारिटा स्केल ले तमरा मेजरमेंट सिस्टम करी अच्छी तो एबीडी खाली मन रखी था तार डिटेल्स को केबे तुमरा क्वेश्चन आसेनी जदि तुमरा क्वेश्चन आसे कि केतेटा मेजरमेंट स्केल अछि चारटा नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो ओके देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन रहिछि टू फाइंड आउट द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द लर्निंग problems of students and to formulate a plan of seeing remedial action option b to find out the progress of student after 6 months of completion of the course or to find out the progress of student after completion of the whole course or to give reward to the students कौन हबो पिला माने yes जो माने ऑप्शन ए कहूछ वेरी गुड टू फाइंड आउट द नेचर एंड कॉजेस ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर सीन रिमेडियल एक्शंस यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा क्लासरूम असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट द सम टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन डिफरेंट टेस्ट द शेड्यूल्ड टेस्ट एंड एग्जाम एज पर द बोर्ड द इनफॉर्मल टेस्टिंग डन बाय द टीचर or the process involved in marking decisions about learning making decision about learning कोटा बा पिला माने
रूपाली कहले सी yes option D is the correct answer. The process involved in making decision about learning. Then evaluation is the process of what? The sum total of mark obtained in different tests, the scheduled test and exams as per the board, or the informal testing done by the teacher, or the process involved in making decision about learning. कोटा हबा आंसर दिया पिला माने क्वेश्चन ने कौन हबा इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ yes आंसर ए हम पिला माने द सम टोटल ऑफ मार्क ऑब्टेन इन डिफरेंट टेस्ट तमरो जोटा एनुअल एग्जाम होउची सेटा इवैल्यूएशन प्रोसेस रे जाउची एंड सेतरे कोन होची तमरो सम टोटल ऑफ मार्क जहां भी प्रीवियसली टेस्ट हेची जेमिति तमर 10th रो बोर्ड एग्जाम हो सेतरे कोन होउची कि तमर जहां एबे रहिची फॉर्मेटिव टेस्ट गुडा होउची जो गुडा मंथली टेस्ट होची तार मार्किंग प्रोसीजर इंटरनल मार्क विथ एक्सटर्नल मार्क सब किछि बोर्ड एग्जाम रे मिसी कि जहां भी टेस्ट हेची सबरो सम हेकी तुमरो गुडा 100% कंसीडर कराई कि सेही थ्रू पिला मानकर मार्किंग कंडीशन करा होची कि तुम 100% रो केते की परसेंटेज सिक्योर करिछ तो सेथि लगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ये सासम मु देखि छी तमरो करेक्ट थिला देन देखिबा नेक्स्ट क्लासरूम असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज say same question कि assessment used during the course of a unit of instruction involving both formal test and informal activities conducted as a part of a lesson are known as what? Summative assessment, formative assessment, diagnostic assessment or छाड़ी दियो डीटा कौन लिखा है छाड़ी दियो बोल टाइपिंग है स्पेटिव असेसमेंट किछि नाही से ऊपर तीनटे भितरु कोटा हबो yes formative assessment is the correct answer. Then next देखो the meaning of measurement can best explain in which of the following terms. Measurement is a process of assigning numbers to individuals of their characteristics according to specific rules. Option B, measurement is a process of assigning ranks to numbers or other characteristics according to random rules. Or measurement is a process of gathering numbers or other characteristics according to the rules of the organization. Or option D, measurement is a process of distributing numbers to individuals according to the specific rule of the organization. D asilani D. Measurement is a process of distributing numbers to individuals according to the specific rules of the organization. Measurement is a process of assigning numbers to individuals or their characteristics according to specific rule. Basically पिला माने एठी तमरा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर अछि सेम जिंस अछि बस गोटे दीटा लैंग्वेज चेंज हे कि आंसर अछि तो ऑप्शन डी भी तमरे करेक्ट हबो जदि ऑप्शन ए भी केही कहउछ एठी करेक्ट हबो काहे ना सेम लैंग्वेज ही अछि टिके पिला माने रहि था पिला माने टिके टेक्निकल एरर अछि टिके वेट करि था
पिला माने गुड आफ्टरनून मैम अरे आफ्टरनून हो गलानी कि अच्छा अच्छा मॉर्निंग रे स्टार्ट करके ताले आफ्टरनून हो गला एबे वॉइस क्लियर आछे तो पिला माने देखा गला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस पिला माने टिके हैंग हो जाइतला अरे वाह मन अपडुनो से सी कहलेनी क्वेश्चन कोन अछि Wagging does not make the cattle fatter. A statement on testing by an educator implies that what? Testing does not reflect the actual ability and hence is waste of time. It's important to measure what can be defined and improved on. There is no point if in any measurement as it leads to comparison and low esteem. It's good to measure objective things only like goods in a shop. कोठा बा पिला माने एटी ऑप्शन बी पिला माने करेक्ट हबो कि इट्स इंपोर्टेंट माने या माने होची केवल गोटे पर्टिकुलर जिंस कैटल को फैट करिबार साहाय्य करेनी गोटे पर्टिकुलर खाद्य तो कौन हेई थाए तेणु भाबिबा दरकार नहीं कि सही अनुसार कि जिनसटा जानिकी ही करबा दरकार कि इट्स इंपोर्टेंट टू मेजर व्हाट कैन बी डिफाइंड एंड इंप्रूव ऑन तो सही अनुसार फोकस करबा दरकार कि गोटे जिंस हमर टीचिंग रे RK you know everything so you can एबे टिके पिला को बुझाइबा को दियो तमे किए जाना नहीं कि आइदर तुम इंटेंस कौन तुम्हें सेते बेलठू आउट ऑफ द कथावार्ता करी चलीच सेते बेलू स्टार्टिंग रे मु देखुची फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एटा क्वेश्चन आंसर सेशन तुमको जदी क्वेश्चन आंसर आसीची तमे कुह थट्टा मजाक करबा गोटे सेक्शन क्वेश्चन आंसर करबा गोटे सेशन किए पराठा खाइला किए रुटी खाइला किए आउ कौन खाइला मु सेते बेलू देखुची तमे सेमती काम करी चलीच तो तार माने कौन होची एटा इंपोर्टेंट होची कि मेजर व्हाट कैन बी डिफाइंड जो जिनसटा दरकार हमको इंप्रूवमेंट करिया पई सपोज एजुकेशन ही तुमको किछि एमती नाही कि हमें केवल गोटे जिनस बा गोटे प्रोसेस करूथुबा सेही प्रोसेस रे हमर इंप्रूवमेंट हबो सेमिति नुह किंतु अकॉर्डिंग टू टाइम हमको जो जिनसटा दरकार सेही हिसाब रे कोन हमको डिफाइन करबा दरकार को रूल बा प्रोसेस टा को फॉलो कले हमें हमर इंप्रूवमेंट करि परिबा सेही ऊपर फोकस करबा दरकार Next, which of the following teaching method may be categorized as learning centric approach? ए भितरु कोटा learning centric approach, lecture cum demonstration, online lecture by specialist, PowerPoint presentation, laboratory experimentation. एटा तमरा ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रा अनंत एंड जोटा प्रीवियसली पचारथिली सेटा असेसमेंट रा क्वेश्चन जोटा कि थिला तुमरो इंप्रूवमेंट करिया पई जहां तुमको डिफाइन करूची ओके एटा होची ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रा जोटा टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक रहउची क्लियर yes option D is the correct answer laboratory experimentation yes RK right answer बुझेला पिला माने एंड आउ गोटे थिंग जो जिनसटा एटा मो स्पीड रे जाउची केना एटा हमर मैराथन क्लास जदी मु तुमको 1 बाय 1 बुझे कि इजी इजी कांसेप्ट भी बुझे कि जाउची ताले बहुत टाइम टेकिंग हबो आ हमें अल्प समय भितर केबे भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा नहीं जदी बेकार कंफ्यूजन थिबा कि रैपिड जाउची जोडी भी तुमको प्रॉब्लम होउची तमे सेठ क्वेश्चन रेज करो कि एई जिनसटा हमें बुझी परनु एंड मु मझिरे मझिरे एक्सप्लेन करूची जो जिनसटा हार्ड अछि मते फील होउची कि एई जिनसटा तमे आगु
आगु के बुझी नथिबो कि ए कांसेप्ट रे कंफ्यूजन होउची आ जो गोटे इजी कांसेप्ट तमे जानिचो से जिनसडा आई थिंक कि से जिनसडा हमें रिपीटेड करके किछि प्रॉब्लम हबनी कि ना हमें रिपीटेड करके से जिनसडा को पुनी बढ़ाई बढ़ाई लेंदी करबा दैट बेटर कि हमें जल्दी जल्दी केते क्वेश्चन सॉल्व करि पारछे सो जोठी जहार भी डाउट हबो सेठी तुम मैंने क्वेश्चन रे निहाती करबो नेक्स्ट होची कि a test is valid for the purpose of which it is used then it is not necessarily reliable, it has certain degree of reliability, it must have perfect reliability, it is certainly not reliable कोटा हबो पिला माने निरंजन A then C B okay आकाश ना अक्षय okay C A B C ओके पिला माने एटा होची कोना इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ऑप्शन बी जो माने कहउछ करेक्ट आंसर एबे बुझ कि से कोन बता जे ए टेस्ट इज वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ व्हिच टेस्ट ता जदी वैलिड अछि ताले किछि ना किछि मात्रा रे किछि डिग्री रे सेटा निहाते रिलायबल हेई थिबो पिला माने किंतु आ गोटे जिंस एठी मने रख रिलायबल जो जिंसटा अछि सेटा मे बी रिलायबल बिना वैलिड रे विदाउट वैलिडिटी रे मध्य कंसीडर करा जाई पारिबो एटा वैलिड किंतु विदाउट वैलिडिटी काहेकि ना रिलायबल कांसेप्ट गोटे ब्रॉडर सेंस जोथरे कि से वैलिडिटी बिना भी हेई पारिबो किंतु वैलिड रे किछि सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी निहाते थिबो गोटे जिंस वैलिड माने सेटा रिलायबल किंतु गोटे जिंस जदी रिलायबल बार तार कंसिस्टेंसी अछि तमे सेही जगह रे कहि पारिबो नाही कि एटा रिलायबल माने एटा मस्ट वैलिड हेइथबो ए गोटे जिंस परीक्षा रे मने रखिबो जे कोनोसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मझिरे मझिरे रिपीटेडली आसी थाए कि जदी एटा रिलायबल एटा वैलिडिटी हबो कि नाही जदी एटा रिलायबल ताहले एटा वैलिडिटी हेई पारे हेई भी न पारे विदाउट वैलिडिटी रे एटा हबो किंतु कोन एठी इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी जदी वैलिड अछि निहाती रिलायबिलिटी हबाटा ही हबो मने रहिला क्लियर मु ओडिया कहूची ना मु बंगाली कहूची आ तमे ओडिया कहूच देन आसिला कौन पिला माने यस मैम प्रीवियस ईयर आरएसटी मेंस रे पड़ीला यस एक समथिंग जीएवी तमरा एटा रिपीटेडली आसची एटा एमएड एग्जाम एंट्रेंस रे मध्ये आसुची बीएड एंट्रेंस रे मध्ये आसची एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा रिपीटेडली मझरे मझरे आसे तमरा भी केबे आसी पारे को ग्रुप रे आर्ट्स हो साइंस हो किबा को ग्रुप रे तो देखा non-directive counseling as proposed by Carl Rogers is most effective when the counselor is equipped with good communication skill, can effectively use testing techniques, establishes good rapport with the subject, or is properly trained in counseling skill. कोटा हबा आशा कौन कहूच बुझी पाइलिनी सी yes option C is the correct कि establishes good rapport with the subject माने सब्जेक्ट जेहेतु नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग रे माने कोन कि गोटे काउंसलर काउंसिल सहित तो किछि डायरेक्ट इंटरफेस करिवो नाही से निजे ही काउंसिलीटा तार जो प्रॉब्लमटा अछि सही पोजिशन नहीं रहिबा दरकार एंड जो सब्जेक्ट सपोज मोर किछ गोटे प्रॉब्लम है जी मुली काउंसिलिंग एंड मु काउंसलर पाखु जाउजी एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसिल ले मो रोल होउजी कि मते काउंसलर फ्री छाड़ी दबा दरकार किछि एमती नाही कि इंटरफेस करबा दरकार मो प्रॉब्लम ऊपर डायग्नोज करबा दरकार मते सेतिक स्कोप एंड एनवायरनमेंट दबा दरकार जोठी कि मु कोन करबी मोर सब्जेक्ट दैट इज मोर प्रॉब्लम सही प्रॉब्लम सहित मु निजे इंटरफेयर करबी एंड मु निजे सही प्रॉब्लम को जानि के मोर सॉल्यूशन करबा को ट्राई करबी गुड रैपो विथ द सब्जेक्ट ओके
A mathematics teacher distributes in his class some plain figures of different shapes to help them learn the concept of area. He is following the theory of J.S. Brunner, B.F. Skinner, Jean Piaget or even Pavlov. नमस्कार तारा प्रसाद, कौन हम ये क्वेश्चन ने समस्त आंसर देबा को ट्राई करो। आंसर इज ऑप्शन सी, जीन पियाजेट एंड पिला माने ये भी मध्य तमरा गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माने कौन कि जने मैथमेटिक्स टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास सम प्लेन फिगर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू हेल्प देम टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ एरिया। ही इज फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ, बुझेला कि माने कौन कि जीन पियाजेट कर जो क्लासिफिकेशन थियोरीटा अच्छी पिला माने से क्लासिफिकेशन थियोरी रे कोन कंजर्वेशन भी गोटे थियोरी अछि। माने थिबा जदि जो माने जीन पियाजेट पढ़ी सारछ कि दीटा शेप रो से माने पात्र दउछन एंड जदि हमें पानी को धर गोटे ग्लास रे पुरोछ एंड किछ गोटे ताटिया बा गिन्ना हमें जहा जे जहा भी कहउतबो सेया बुझ कि सेइथरे आनी कि हमें पानी पुरोछ एंड जते बेले हमर कंजर्वेशन कैपेसिटीटा वृद्धि हबो, जते बेले हमर कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज आसीबो सेते बेले हमें कांसेप्टटा को बुझी परिबा कि ता भीतर डिफरेंस कोन अछि बा सेम थिंग कौन अच्छी। पानी सेम अच्छी ना पात्र डिफरेंस हो गले पानीटार डिफरेंस आसुची जो सेफ अनुसार डिफरेंशिएशन एटा होचे जीन पियाजेट थ्योरी अनुसार। तो एठी हबो जीन पियाजेट। ओके बुझियला पिला माने। नेक्स्ट जिबा Which of the following is not a characteristic of learning? Learning रे कोटा characteristic नुहा एटा सबुठ इजी क्वेश्चन समस्त ही कहि परिबा। It is changes behavior of the learner. It always results in a positive impact. It is continuous and lifelong process. It is develop personality of the learner. Yes, learning may be positive and negative. एटा केबे भी positive हेई परिबा नाही। ओके नेक्स्ट बा कि which of the following statement is false about continuous and comprehensive evaluation? It helps learners to monitor their progress. It amounts to an extra work for teachers. It is conducted by the teacher who teaches. It reduces stress and anxiety among learners. कोडा बा पिला माने तारा प्रसाद वी। ओके yes, very good. Option B, it amounts to an extra work for teachers. Okay, yes प्रज्ञा option B हवा किछ कथा नहीं। नेक्स्ट देखा which of the following concept is a measure of consistency of scores obtained on repeated application of the same test under the same condition, that is reliability, usability, validity or objectivity. Yes, yes, reliability is the correct. Reliability माने consistency मान repeated score means एमिति हे पारे सेम स्कोर आसीबार पॉसिबिलिटी थाए। जेमते कि मु गोटे इंटरवल है आज तुम गोटे क्वेश्चन मैराथन कली तो माने जो हिसाब रे जे रेस्पॉन्स दउछ जदि मु आ दिने भी करूची ताले जदि तुमरा नॉलेजटा सेति अछि हम ट्रूली तुमरा सेही जिंसटा अछि ताले कंसिस्टेंसी रिजल्ट माने सेही पाखा पाखी रिजल्ट बा तुम रेस्पॉन्सटा से सेम ही आसीबो। ओके नेक्स्ट देखिबा कि ताले पिला माने एठी कहलो वैलिडिटी माने कोन? वैलिडिटी माने कोन?
व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी समस्त के रेस्पॉन्स दियो व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी रिलायबिलिटी माने कंसिस्टेंसी रिजल्ट ताले वैलिडिटी कौन ओके yes yes Niranjan what to intend to measure yes Tabitha then next question देखो which of the following statements describes learner setting teaching learning process teacher detects notes and students write down now teacher directs students to read the book or students discuss the issues among themselves or teacher speaks and students listen passively कोटा हबो yes yes option C is the correct answer students discuss the issues among themselves because it is learner centering environment next ba कि for assessing higher mental abilities of learners the most appropriate type of test item is open ended type matching type assertion reason type or multiple choice type कोटा हबा पिला माने higher level thinking ता तमरा करिया पई कोटा हबा yes मनोज सुकमन कोटिया आशाराणी ओके yes पिला माने देखो एठी जो माने ऑप्शन ए दोजो ओपन एंडेड टाइप सेटा ही हबा आ किछि किछि आसरानी जेमते सी देई छंती अमन भी सी देले सी हबनी पिला माने काहे की हबनी काहे ना एठी देइछि कि हायर मेंटल एबिलिटीज ऑफ द लर्नर मोस्ट एप्रोप्रिएट देइछि कि जेते बेले मु तमको किछि गुडे ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारछु सेते बेले तुमे भाबिबा को चेष्टा करबो एंड तमर जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डा अछि सेइटा डेवलप हबो तुमे बेसी रु बेसी भाबी एटा केमिति हेई परबो कोन हेई परबो तम मन रे क्वेश्चन आसीबो एंड तुमको जिते गोटे एसे किसी दि जाए तुम भाव कि ना कौन वार्डिंग देवी क्या केमी सिस्टमेटिकली लिखी तो जेहेतु तुम थिंकिंग पावर डेवलप होची तो हायर थिंकिंग मेंटल एबिलिटी तुम ये डेवलप है किंतु जदि खाली आसर्शन रिजनिंग होची से तुम गेस अच्छी तुम आसर्शन रिजनिंग रे आराम से गेस मारिक एबीसीडी करदे पार तेणु से तुम किसी हायर थिंकिंग हेनी सबू पिला आसर्शन रिजनिंग रे केबे भी हायर थिंकिंग करती ना किंतु जदि तुमको दिया किसी गोटे एसे टाइप ओपन एंडेड क्वेश्चन ताले तुम बाध्य भाविबा कहीं बिना भावना तुम गोटे एसे टाइप बा ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या आंसरेबल कर तुम किसी ना किसी तुम थिंकिंग डेवलप कर क्लियर देन नेक्स्ट कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कि देयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड ओके score interpretation method is the manual in the manual and they cannot be used for all population option D test administration can use them as he likes कौन हवा तारा प्रसाद कहले डी ओके नेक्स्ट जल्दी जल्दी कह केते टाइम हेलानी सी डी
कौन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज फॉर ऑल पॉपुलेशन सो सी हेवन डी सी एठी ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर पिला माने जो माने दउछ काहे के हबनी आरके साउ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर ऑल पॉपुलेशन केमिति हबो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी क्राइटेरिया थाए कि को पॉपुलेशन बा को पीपल मानक पाई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होउची सेठी देछि ऑल पॉपुलेशन सेठी तम लेखानी ऑल लर्नर्स कि तमरा एई लेवल लर्नर्स कि को एग्जामिनेशन दउथबा पिला माने सेथि लागि सेथि लगे एठी हबनी कि ऑल पॉपुलेशन किंतु देखो एठी कोन देछि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज देम एज ही लाइक्स किंतु स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ता केवल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जेमिति चाहुछन सेमिति बनै परिबे नाही ऑलरेडी करिकुलम बा एग्जामिनेशन पैटर्न तम असेसमेंट सब किछि फिक्स है कि थिबो तम माने एबे जो आरएसटी एग्जाम दउचो बा एलटीआर एग्जाम दउचो तार नॉर्म्स एंड रूल ऑलरेडी फिक्स है कि थिबो कि को लेवल लो क्वेश्चन आसीबो कोन आसीबो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो माने केवल एडमिनिस्ट्रेशन करूछनी से माने चाहि देले किछि ओडे परिवर्तन हे जीवनी माने रूल रेगुलेशन नॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट माने रूल नॉर्म्स फिक्स्ड ऑलरेडी हमें पढ़िले फर्स्ट लाइन में कि ता नॉर्म्स एंड रूल फिक्स ताले तमे ता बाहर को जाई कि तम मन इच्छा तमे कोन चाहुचो तमे कोन पसंद करचो सही हिसाब रे करि परिबो नाही तेनु एटा ऑप्शन डी हबो एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट केबे भी सब पॉपुलेशन के ऊपर हुएनी तार क्राइटेरिया थाए को एग्जामिनेशन ता स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट माध्यम रे कंडक्ट हेई परिबो ओके ओके ठीक अच्छी बुझीगला समस्ते जो माने सी कहिथिलो आशराणी तमे आई थिंक फास्ट डी कहिथिलो देन सी को कन्वर्ट हेलो the which of the following strategies when adopted by the teacher acts as the best motivator for students encouraging competition seeking students cooperation using teaching aids or conducting frequent tests कोड आबा पिला माने yes option B is the correct answer कि seeking students cooperation next है कि a collection of learners work sample on various learning tasks over a long period is technically called as what portfolio report card term paper or rubric कौन हम पिला माने निरंजन कहले नहीं है तारा प्रसाद देखा थे सी ए आसीगला बोधे डबल ए मारुथिले ओके वेरी गुड पोर्टफोलियो यस ऑप्शन ए पोर्टफोलियो जल्दी जल्दी पिला माने सारी दियो कहीं आमर क्लास बोधे 11 स्टार्ट है 11 केतबेले गोटे बाजी गलानी तुम मान सारे डिस्कसन करू करू मु भी फ्लो रे चलची एंड तुम मैंने भी फ्लो रे चलच आई थिंक बोधे से लगे किए जने पचारि केतबेले क्लास सरीबो मते किछि जणा पड़ुनी टाइम ही एंड मु पढ़ाई चलची ओके which of the following is the highest level of teaching कोटा highest level of teaching ए भितरु memory level understanding level reflective level interpretation level yes reflective level ताले lowest level पिला माने कोटा lowest level of teaching कोटा lowest level of teaching कोटा so the highest reflective then lowest तारा प्रसाद महाराणा yes memory रूपाली yes memory level होचे lowest हम मझिरा हमर अंडरस्टैंडिंग दा पढ़ी कि छटपट होचे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो while developing a selection test for entrance to a course which of the following types of validity is considered important को प्रकार validity construct validity content validity predictive validity और concurrent validity
आकाश रूपाली ओके पिला माने एटी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हबो एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी काहेंकी कहीं प्रेडिक्टिव माने कौन तुम फ्यूचर परफॉर्मेंस को नहीं कि कौन कले मेजर करा हेले कौन करा जाई पारिबो जो तुम एंट्रांस टेस्ट टा गोटे कोर्स को नहीं कि होउची ताहा तुम फ्यूचर वैलिडिटी को देखिकी ही मेंशन करा जाई कि फ्यूचर आउटपुट को देखिकी प्रस्तुत कराई छै सेति लागि एठी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हबो एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी माने गोटे थ्योरी को नहीं कि एक्चुअली तुम कौन कंस्ट्रक्ट थ्योरेटिकली करबा को चाहूछ कंटेंट वैलिडिटी मींस पर्टिकुलर कंटेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया को नहीं कि जो वैलिडिटी प्रोसेस ता हेई थाए देन कौन होची कंकरेंट वैलिडिटी से जिनस रहिला जते बेले आपण गोटे कंपैरिजन करूचे गोटे रिसेंट जिनसर कथा को पी माधव साहू एक यस एंट्रांस प्रेडिक्टिव काहे ना फ्यूचर जिनस को आखे आगे रखी कि तमे प्रेडिक्ट करी कि गोटे एंट्रांस बा एग्जामिनेशन कंडक्ट करूछ बुझियला तेटी कंटेंट हबनी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हबो पिला माने द नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड प्रोजेक्ट मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डिस्कवरी मेथड और डिस्कशन मेथड कोटा हबो यस आसराणी माधव यस ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नेक्स्ट जीवा कि which of the following is not an appropriate strategy for learning तो constructivist approach रे कोउटा learning strategy पई appropriate कि not देचे appropriate नुह initiation of debate and discussion creation of problem solving situation direct experience with learning situation encouraging students to read textbook कौन हवा yes very good yes एटी ऑप्शन डी हबा एटा नुह ना encouraging student to read textbook only the option D is the correct answer next the law of readiness in the context of learning process was given by whom Thorndike Piaget Pavlov and Skinner का द्वारा कुआ होइছে पिला माने law of readiness पिला माने एटा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक कहचंदी लॉ ऑफ रेडीनेस कथा स्किनर कोडे आसिले थॉर्नडाइक कहचंदी ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज ए असेसमेंट टूल फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ओपन एंडेड एसे टेस्ट मल्टीपल चॉइस टेस्ट टीचर्स ऑब्जर्वेशन कौन हबा Which of the following may be used as a assessment tool for constructivist teaching learning process? Yes, option B is the correct answer. Open-ended essay type test. Okay. Next, which of the following is not a characteristics of summative assessment? Summative assessment ra कोटा characteristics नुहा helps the teacher to modify teaching, result help in promoting to the next grade, conducted at the end of the teaching work, certification and reporting learning level. कोटा पिला माने नुहा जल्दी जल्दी टिके आंसर दिया पिला माने लंच टाइम हेलानी का भोक लगुनी कि रे ऑप्शन ए यस हेल्प्स द टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग का पेपर तो भोक लगेनी तमें गोटे जगह बसच तुम कहीं भोक लगे कौन मु तो एजाए गाधेनी अरे वाह पूरा मोटिवेशन आ जोश को मानिया को पड़ो सेमती न गाधे कि बसता 2टा बाजी जाओ गोटे क्लास सरिया कथा गड़ी गड़ी गलानी हौ देखिबा आउ केते क्वेश्चन अछि जति कि हेई परिबा 10-15 मिनिट डिस्कशन करिवा देन एंड करिवा सेशन खाइबा सहित बा क्लास चलची अच्छा तमे घरे बसी पड़छ तमरा खाइबा सहित क्लास चलची एठी जो लोकटा ठिया हेची मु ता एपट हाथ रे धरी धरी एपटे कहि कहि पढ़ाई परिबिन ना
ओके ठीक अच्छी सम teachers ask the student probing questions during teaching learning process. This is called summative assessment, formative assessment, criterion reference assessment or non reference assessment. कौन हबा? Very good Rupali. Yes, formative assessment. Next question देखा, which one of the following assessment practices will bring out the best in students? When students are required to reproduce facts as tested by multiple choice question, when the emphasis is laid upon positive correlation between test score and student ability, when the marks obtained and the position secured by the students in the class are the ultimate determinants of success, or when conceptual change and student alternative solution are assessed through several different methods of assessment. कोटा हबा पिला माने? Yes, option D is the correct answer. When conceptual change and students alternative solution are assessed through several different methods of assessment. Clear? Very good. Which one of the following situation is illustrative of a child-centered classroom? A class in which the teacher dictates and students are asked to memorize the notes, or a class in which the textbook is the only resource the teacher refers to, or a class in which the behavior of students is governed by the rewards and punishment the teacher would give them, or a class in which the students are sitting in groups and the teacher take turns to get each other. कोटा हबा? D. Yes, option D is the correct answer. अरे मोटो सुपर फास्ट तम माने मोर बैटरी डाउन हो गलानी ताले. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कि स्कोर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विथ द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स इन दैट एज ग्रुप इज डैश इंटेलिजेंट क्वोशेंट, डेविएशन आईक्यू, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. पिला माने इंटेलिजेंस क्वोशेंट माने तमर जो इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल टा रहउची, देन तमर डेविएशन आईक्यू माने ता जो गोटे जिंस आईक्यू लेवल डेविएट करूची माने डिफरेंशिएशन डिफरेंट आईक्यू लेवल जोडा कहउची कंपैरिजन हमें जतबेले करची. एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस माने कोन कि तमे केमिति इफेक्टिवली गोटे सिचुएशन रे एबिलिटी एंड इंटरेस्ट तमर जो नॉलेज ता अछि ताको केते इफेक्टिवली इंस्टेंट यूज करि पारुछ तम इंटेलिजेंस लेवल को. एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस माने तमर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस नॉलेज को तमे गोटे टाइम रे इंटेलिजेंस ता को यूज करि पारुछ. तो एठी कोन ऑप्शन हबो? यस ऑप्शन बी डेविएशन आईक्यू. कहीं ना परफॉर्मेंस विथ द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स तमे कंपैरिजन करूछ तो ऑब्वियसली डेविएशन आसीबो जोटा स्टैटिस्टिकली अछि गोटे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑब्वियसली डेविएट हबो. ओके देन कोन ना क्वेश्चन बिहेवियर इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट in a frame of reference provided by the organism itself or by external objects or fields of force. Which of the theory of learning does it belong to? Stimulus response theory, theory of systematic behavior, theory of conditional response or operant and condition theory. कोटा हबा पिला माने? जल्दी टिके रेस्पॉन्स दियो. स्किनर कौन? ओपीटी ओसीटी हेलो बो ओसीटी ओपीटी ओके यस यस लास्ट ऑप्शन हम ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी. पिला माने बुझी पारुछ कि ऑप्शन डी ऑपरेशनल कंडीशनिंग कहा कोन पई हबो ना कहि भी कोन पई हबो? यस ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी समस्त बुझी पारुछ काहे ऑप्शन डी इठी हैला ना एक्सप्लेन करिया दरकार. ठीक है जल्दी रिस्पांस दियो. यस यस आर के साहू
टिके पिला माने पिला माने देखो ये पचार बिहेवियर इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इन ए फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ और बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट देला और फील्ड ऑफ फोर्स तो बाहर कौन सी गोटे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आसी तुम जो बिहेवियर चेंजेस होउची पिला माने यस मैडम कहूची से जिनसटा तो से यार ऑपरेंट कंडीशनिंग माने कौन कि एनवायरनमेंट रू तुमको जो कॉन्सिक्वेंसटा मिली थाए जो रिवार्ड हो बा पनिशमेंट हो तमें फिजिकल एनवायरनमेंट बा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सहित तुम जो कनेक्शन बिजिमटा है कि तुम गोटे एक्शन बा बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है तो से लगी सेटा हूँ ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी ये भी सही सेम जिनस देती कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स और फील्ड ऑफ फोर्स द्वारा तुम गोटे बिहेवियर मॉडिफिकेशन होची सो दैट दिस कांसेप्ट रिलेटेड टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहीं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रो कॉन्सिक्वेंस फल रे से जिनसटारे तुमरा चेंजेस आसुची ओके क्लियर नेक्स्ट बा कि अकॉर्डिंग टू whom a short answer essay item is on in which of the examined supplies the answer in one or two lines and is usually concerned with one central concept Marshall and Hales Lin and Miller Grunland NCF 2005 आंसर दिया एटा किए कहितले अरे बाबा आशाराणी ताले एटा निहाते पढ़िच कोठी हो यस निरंजन एटा गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा होची मार्शल एंड हेल्स ठीक अछि वेरी गुड आशाराणी यस एटा जेहेतु डेफिनेशन आसीबो सब डेफिनेशन जानिबा पॉसिबल नुह किंतु तुम ट्राई करो जहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी रिपीटेड क्वेश्चन किंबा जो कौन सी टीचिंग एग्जाम रे पढ़ी से गुड़ा टिके मन रखिया पई ओवरलुक करदेव सो दैट केबे एग्जाम रे तुम जदि आसे तुम गोटे मार्क आराम से आनी परिबो स्किप करबा अपेक्षा नेक्स्ट बा ठुक्का मारिले अच्छा अच्छा से ठुक्का मारिले आ तुम जान देलो क्वेश्चन होची ए ग्रेडिंग सिस्टम इन व्हिच टीचर्स बेस असेसमेंट डिसीजन अबाउट एन इंडिविजुअल्स वर्क ऑन कंपैरिजन विथ द वर्क ऑफ पीयर्स इज क्लासिफाइड एज नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग नॉन ऑफ द एबव कौन हबो पिला माने यस आ सब कुआडे गल कौन मु थकी जावा कथा भोकरे तुम माने थकी जाउछ मु एनर्जी रे पढ़ाउची yes non reference test by grading next which of the following is not the characteristics of formative evaluation by assessment ro कोटा characteristic नुह it is design is an exploratory and quite flexible it seeks to identify influential variables it monitors teaching learning strategy during instruction or it is almost unobstructive and non reactive कोटा हबो पिला माने जल्दी जल्दी टिके आंसर देबा को ट्राई करा बाबू माने माँ माने जा भी जल्दी जल्दी यस सासराणी डी रूपाली डी यस शिवानी वेरी गुड जो माने ऑप्शन डी कहू करेक्ट इट इज ऑलमोस्ट अनऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव फॉर्मेटिव ऑब्वियसली रिएक्टिव कहीं ना फॉर्मेटिव रे देइछि कोटा फॉर्मेटिव रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुह तेणु एटा जो नॉन रिएक्टिव देइछि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बा असेसमेंट ऑलवेज तुमको जो फीडबैक ता दिए सेटा रिएक्टिव से फीडबैक रो रिएक्शन ने तमे तमरो टीचिंग प्रोसेस रो मॉडिफिकेशन करके इंप्रूवमेंट करिता सो दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट तो आउ
आउ थे कहीदे पिला माने जो माने भी एसएसबी टीजीटी एंड जो माने आर्ट्स पीसीएम किंबा सीबीजेड जोनसी भी बैच रे जॉइन हेबाकू चाहूछंदी जहाँ अपकमिंग आसी जो मानकर एलटीआर हेनी से माने फ्यूचर रे टीचिंग जॉब रे जिबा पई चाहूछंदी तो हमर एठी जो ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर अछि तो आपण माने कांटेक्ट करंतु एंड आपण मानकर जहाँ भी डाउट अछि क्लैरिफाई करंतु किंबा जदि हम सहित जॉइन हेबाकू चाहूछंदी तेबे कांटेक्ट निहादे करंतु। नेक्स्ट देखिबा वेलकम रूपाली टू व्हिच ऑफ कोहलबर्ग stages empathy and pro-social behaviors are most closely related? Pre-conventional ethics, conventional ethics, post-conventional ethics, none of these. कोटरे B yes B ओके बी रूपाली कहले सी ज्ञानेन्द्र तराई कहले डी एटा ऑप्शन बी ठीक हबा पिला माने कन्वेंशनल एथिक्स अंडर रे आसीबो कोन ना तमरा एम्पैथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर्स। देन जिबा in this world of human affairs there is no rose nuance have a bee at the age of 14 if he talks with a childish lips he is called a baby and if the answer in a grown up way and he is called an impatient whose view was it एटा किए कहिथिले पूरा डेफिनेशन टा तांकर मोर पूरा अमेरिका रो अफ्रीका पळेला पढिला बेलकू रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी श्री अरविंद और एस राधाकृष्ण। ओके तारा प्रसाद कहिया देखिए कौन यार आंसर आसुची ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। ओके पूर्व क्वेश्चन ने किछि नाही जे पचारि थिला एटा तांकर जो कोहलबर्ग स्टेजेस अछि तांकर जो तीनटा स्टेजेस रे पुनी तांकर लेवल अछि तमर से लेवल गुडा का को लेवल ले कोन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि एटा थ्योरी रे अछि किछि बुझिबार नै कि कन्वेंशनल एथिक्स माने कोन तांकर डिफरेंट स्टेजेस रा लेवल अछि सेटा पूरा थ्योरी अछि कोहलबर्ग थ्योरी सेइत्रे ही अछि या वर्ड रा मीनिंग सेमति किछि नाही जोडा कि तमे बुझिबा दरकार से थ्योरीटा पढी देले क्लियर हे जिवो। Then होची condition involvement a range of motor or coordination difficulties due to brain damage is known as epilepsy, spasticity, cerebral palsy, articulation disorder. कौन हबा पूरा बाटे के पी जाइछ सब। यस ऑप्शन सी सेरेब्रल प्लासी तार पूर्वटा दिस क्वेश्चन तारा प्रसाद यही क्वेश्चन की काइंडली कुआ हम जल्दी जल्दी जीवा। ओके कि से देइचे कोटा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक नो इट डिजाइन इज एक्सप्लोरेटरी एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तमे एक्सप्लोरेटरी आइडियाज पाई परिबो एंड तमरो आइडियाज को फ्लेक्सिबल करि परिबो लर्निंग को चेंजेस करि परिबो सो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सेकंड होची इट इज सीक्स टू आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल ऑब्वियसली इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल जोटा इन्फ्लुएंस तुमको करिबो कि तमे लर्निंग प्रोसेस को केमिति आगो को नबो केमिति ग्रो करिबो केमिति डेवलपमेंट करिबो देन तापरे इट मॉनिटर्स टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन तमे जानि छ कि इवैल्यूएशन टा कोन ना गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस ता फीडबैक ता जेतले मिले तमरा ऑनगोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हेल्पफुल करि थाए तेनु इट इज ऑलमोस्ट अनऑब्स्ट्रक्टिव जोटा ऑब्स्ट्रक्शन तमे कहउछ क्रिएट करिवो एंड नॉन रिएक्टिव माने कोनसी रिएक्शन आसीबो नाही एटा भूल कथा कि तमे ऑलवेजली रिएक्टिव हबो
एंड तुमर प्रॉब्लम सॉल्व हो पार जहाँ भी तुम ऑब्स्टेकल आछि ताहा क्लारिफाई हो पार सो दैट एटा होची करेक्ट आंसर एथरे तो बुझिबारे किछि नहीं यस शिवानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिएक्टिव सबू फॉर्मेटिव जदि तमे क्लियर करिच जदि तुमर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम क्लियर अछि ताहाले आराम से एटा बुझि हे जबा ओके then which of the following is not a guideline for encouraging creativity ask student to support dissenting opinions use a class brainstorming session whenever possible or give ungraded assignment from time to time or don't reinforce a pattern of telling secrets कोड हबा Yes, option D is the correct answer. Don't reinforce a pattern telling secrets. Which of the following is not a guideline for encouraging creativity? Don't reinforce. Not देइछि आशा जेतु नॉट नुह तमे क्रिएटिविटी रे reinforce a pattern of telling secrets सेटा हबो नाही. Yes, then according to psychoanalytic theory of motivation, which of the following is true? Man's behavior is directed by his will and that the will is motivated by intellectual evaluation or motivation is an element of the highest importance in the process of learning or human behavior is inspired by the desired consult in the unconscious and subconscious mind of the individual and emphasize that motivation to work is rooted from physiological to self actualization need. Code haba Tara pressure C is yes here is option C is the correct answer human behavior is inspired by the desired being consult in the unconscious and subconscious mind of the individual जोटा कि अब्राहम मास्लोंकर थ्योरी थिला साइकोएनालिटिक ना साइकोएनालिटिक अब्राहम मास्लोंकर नुह सॉरी तापर एबे मते समस्त कहबा कुआडू आसिले भूल कहि देले हमकु मोटिवेशन देखली तो तांको आडे पळेली स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट इज अ वे फॉर फोर्सिंग इंडिविजुअल स्कूल्स to take responsibility for what happens to the children under their jurisdiction was the view of whom कार view थिला भोकरे मनीष बाया हे गलानी कोन कहूची मुमे आ जानि पाउनी एटा भी तमर किछ जनकर भूल हेई पारे बी सी ए हेई पारे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हे डेफिनेशन हेले भूल हमबो नेक्स्ट जिबा कि इन व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट टीचर्स गेट प्रॉपर स्कोप फॉर इवैल्यूएटिंग द असाइनमेंट entrusted upon them creative management laissez faire management decentralized management और democratic management कोडा हबो बिला माने Yes, option D is the correct answer. That is democratic management. Next, the prompting method of memory testing is created by कहा द्वारा मोन्स्टरबर्ग, H. एबिंगहॉस, एफ्रूसी और फोलमैन. कहा द्वारा the prompting method of memory testing. इटा इंटेलिजेंस चैप्टर D B. तो ऑप्शन C is the correct answer. मतलब लेसेस फेयर सिस्टम मीन्स कौन लेस कंट्रोल माने तमे जेतु चिल्ड्रेन अच्छा मिनिमल कंट्रोल ऑफ द टीचर और मिनिमल कंट्रोल ऑफ द हायर अथॉरिटी अपन द लोअर बा सबऑर्डिनेट वर्कर्स बा सबऑर्डिनेट जदी चिल्ड्रेन अछंती तुमे टीचर अच्छा ताले तुमरा मिनिमल अथॉरिटी अपन स्टूडेंट्स वर्क और लर्नर्स वर्क सेटा लेसेस फेयर सिस्टम को कंसीडर करि थाए. क्लियर. नेक्स्ट देखिबा कि at which phase a child cannot solve a problem alone but can be successful under adult guidance or in collaboration with a more advanced peer. Zone of proximal development, zone of actual development, information processing or metacognition. कौन अब पिला माने? Yes, JPD.
तो जेपीडी तुम मैंने पचारि कई जने जेपीडी एंड स्कैफोल्डिंग कौन पिला माने जेपीडी माने होचे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बड़ जिनसटे तो पिला माने जदि एटा जेपीडी हमें कहबा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ता भीतर अछि एटा कौन ना जेडी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड एटा गोटे हे परबो स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग माने जेपीडी होची गोटे ब्रॉडर टर्म ता भीतर रहउची जोन ऑफ एक्चुअल जेपीडी मींस कौन व्हाट ए चाइल्ड नो बाय इटसेल्फ एंड व्हाट कैन बी डन बाय अदर्स हेल्प माने कहार हेल्प द्वारा गोटे चाइल्ड रो कौन हेई परिबो ही और सी कैन डू समथिंग और व्हाट दे नो एलोन माने से निजे कौन जानि छथि तांकर एक्चुअल नॉलेज कौन अछि एंड जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट माने मु केते के नॉलेज जानि छी मोर केते जन नॉलेज अछि एंड स्कैफोल्डिंग सबटु लोअर लेवल ता माने होची आमे गोटे शॉर्ट पीरियड पई जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अंडर रो गोटे पार्ट होची स्कैफोल्डिंग जारा माने होची आमे गोटे छोटो पीरियड टेम्पोररी पीरियड पई जने जदी असिस्टेंट चाहूची आमे जेतु मोर नॉलेजियस पर्सन आमे ताको किछि असिस्टेंट प्रोवाइड करिबा ओके क्लियर हैला कहीं पचारि थिले सेथि लागि कहि देली ए कथाटा नेक्स्ट देखा कि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासिस व्हाट हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन और कंटीन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग और फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विथ द टीचिंग और रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन कोडा पिला माने Option A is the correct answer. How learning can be observed, recorded and improved upon. Learning को improve करिया पे try करिबा continuous and comprehensive evaluation पिला माने B हबनी continuous testing on a comprehensive scale to ensure learning. Continuous and comprehensive continuous माने periodical evaluation पिला माने नुह कि continuously पूरा rigorously हमें evaluation करी चलथिबा. Continuous means periodical evaluation. Okay? किंतु से पीरियडिकल एते कंटिन्यूटी थिबो जोडा पिला मन को लास्ट को बर्डन बा एंजाइटी सृष्टि करिवो नाही देन व्हिच असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स टू बी इंक्लूडेड फॉर एग्जामिनेशन चेकलिस्ट पोर्टफोलियो रेटिंग स्केल और रूब्रिक्स कोडा हबो यस पोर्टफोलियो असेसमेंट पिला माने टाइम हे गलानी आ 2-3 मिनिट हमें हार्डली क्वेश्चन आंसर जति के होची डिस्कशन करबा आ नेक्स्ट क्लास रे देखबा ओके बहुत समय हला एक्चुअली क्लास टा कंटिन्यू हे गलानी तम मानन को भी का को बोर फील होतबा एंड खाइबा टाइम आसलानी मते भी भोक लागलानी ताऊ किछटा क्वेश्चन डिस्कशन करबा एंड जहा रहिला नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा डन Which part of the brain is involved in highest cognitive process? को part टा Option B is the correct answer. ऑप्शन बी मते गूगल कहि जे जदि पिला माने भूल थिबो कि साइंस स्टूडेंट अच्छा मते करेक्ट करे कि कहिबो जदि ऑप्शन बी भूल हेई थाए कहीं ना ऑप्शन बी रा आंसर टा मते गूगल कहि मोर आईडिया नहीं मो स्टार्टिंग रो कहि दोची जो माने जानि छ ए विषय रे ए क्वेश्चन टा रहिला जो माने टिके जानि छ मोर एते भी आईडिया नहीं तो तमे सही अनुसार मते अच्छा रूपाली ठीक अछि कहियनी ठीक अछि Which of the following is not a characteristics of critical pedagogy? Critical pedagogy रो को characteristics ओके ठीक अछि मु क्लियरली देखिबे काई ना कि ये कोचा करेक्ट अछि कि कोचा करेक्ट नाही मु आउटी क्लियरली देखि कि तम मानम कहिबे किंतु सेटा गूगल ले ही तम पई आंसर आसुची Which of the following is not a characteristics of critical pedagogy? Option A to empower students and help them to help themselves, to subjugate students by oppression, to promote emancipation and intellectual growth, to center its practice on community and collaboration. कोडा बा पिला माने yes already तुम माने आंसर दे साले ऑप्शन बी to subjugate students by oppression. Next, although approximate chronological ages are attached to the stages children pass through at different rates, whose theory of development helps us to understand this statement. कहा थिबरे रे पिला माने एबे पढितले stages of development
ओके ठीक अच्छे रूपाली ऑप्शन सी पियाजेट तो एटार आंसर ही देदियो एटा को लास्ट क्वेश्चन रखिबा पिला माने या पर हमें एंड ऑफ करबा कि a child reasons you do this for me and I will do that for you in which stage of Kohlberg's moral reasoning would this child fall the good boy good girl orientation the social contract orientation the instrumental purpose orientation the punishment and obedience orientation कोटा हबा B C एटा ऑप्शन B is the correct sorry the option C is the correct answer पिला माने the instrumental purpose orientation माने कोन कि एथिरे रखिबा सेल्फ इंटरेस्ट तू जदी मो पई करूचु ताले मु मध्ये सही वर्डटा तो पई करबे जोटारे रेसिप्रोकल जिंस रहइबो माने म्यूचुअल डिस्कशन माध्यम रे सेल्फ इंटरेस्ट को हेल्प करिया पई से माने कामडा करबे ओके क्लियर तो जति के आज डिस्कशन कले समस्त बुझी परला यस रूपाली टिट फॉर टैट तो आज क्लास को पिला माने मैराथन क्लास को एठी एंड करबा समस्त बुझी परला क्लियरली जहा जहा डिस्कशन कले भल लागिला आज क्लास टिके फीडबैक दबा आज क्लास समस्त को केमती लागिला कोन थिला आज क्लास तम मन को ठीक लागिला कि नाही क्वेश्चन लेवल कोन थिला तम मन को क्वेश्चंस केमिति लागुची काइंडली फीडबैक टिके गोटे मिनिट भितर समस्त टिके देई दियो तापर हमें क्लास को एंड करबा जे जा खाइबो कि रेस्ट करिबो कि अलगा पाठ कोन पढिबो माधव अराउंड 200 प्लस थिला बट किछ क्वेश्चंस रही गला काहे ना ऑलरेडी 2टा बाजिलानी लंच आवर हे गलानी एंड आ पर आवर क्लासेस रही ची तो न नहीं मु मैराथन नहीं जाई थांती 200 प्लस जाए ओके थैंक यू एवरीवन तुम मान पेसेंस कहीं 2 घंटार क्लासटा ऑलरेडी 2.5 घंटा प्लस भी पलैलानी आ तुम मैंने एपर्यंत कन्स्टांटली बसीच एंड सपोर्ट करुच कन्स्टांटली रेस्पॉन्स करुच जहाँ पचारे एंड आंसर दौच तुम समस्त को थैंक यू क्लास बहुत थिला मैम ओके थैंक यू रूपाली जाओ भल लगिला कि तुम मानकर तुम रेस्पॉन्स सुनिकी कि तुम मानक भल लगुच क्वेश्चन पैटर्न थैंक यू सो मच एवरीवन तो समस्ते टाटा बाय बाय जाओ खाई दियो किंबा किछि रेस्ट नियो किंबा पढ़ यस नेक्स्ट आनिबा आसारानी क्वेश्चन मैराथन आनिबा सेशन किंतु आजिरा क्लास को एठी एंड अप करूची थैंक यू एवरीवन।